Hello. Hello, hello. Welcome to day two of the Women's Vidarbha Premier League. We have match number two, the toss being prepped here between the NECO Master Blaster and the Orange Tigresses. The captains of the two teams joining us in the center, Shraddha Nabira for NECO Master Blaster and Disha Kasat for Orange Tigresses. Also joining us is the match referee, Sonia Rajoria. Representing NECO Master Blaster is Miss Priyanka Jaiswal, who's also representing Jaiswal NECO Group, and along with her, Mr. Abhijit Majumdar, who's the owner of Orange Tigresses. Now, to start with the toss, Disha will be flipping the coin. Heads is the call. Tails it is. Disha, your call. What do you pick? We would like to bowl first. Any particular reason for that call? As you know, it rained in the afternoon little. There is slight moisture in the pitch, and we want to take the advantage of that. And that's why we chose to bowl first. We have a good bowling side, so let's back that. You're playing a side that's already won a game. Are the nerves real? I don't think so. We say that pressure is privilege. We are coming to retain the cup again. And that's what we love about the game. Where there is pressure, we look forward for it. And that's the joy about playing cricket. Perfect attitude. Well, all the best for today's game. Shraddha, what would you have picked? Even I would have liked to pick bowling first, but that's fine. Fresh off a win, that confidence must be high. How is the team approaching today's game? I mean, the confidence is definitely high, and again, it's a new game, it's a new day, and it's a new start for the team again. Any changes in the side today? No, it's the same 11. All right, all the best. Let's see what you can do with that side today. Thank you. That is it from the coin toss. The news from the center is that the Orange Tigresses have won the toss, opted to field first. Thank you. Shraddha ने दिया
Okay, ठीक है. So who's captaining the Orange Tigresses this time? Disha Kasat या Kasat? Kasat. ठीक है. So starting with Orange Tigresses. क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम सदरनाथपुर आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत करता है. दिस इज द डे 2 मैच 2 और आज का मैच है ऑरेंज टाइग्रेसेस वर्सेस निको मास्टर ब्लास्टर. Orange Tigresses won the toss, decided to ball first. Are you ready? Make some noise! Good evening to all those who have tuned in. We are bringing you live cricket action from the VCA Civil Lines here in the Orange City. It's day 2 of the Women's Vidarbha Premier League, where the defending champions Orange Tigresses will be locking horns with the NECO Master Blaster. Remember, the Master Blasters are coming into this game after defeating Pagaria Strikers in the inaugural game of this tournament, whereas Orange Tigresses, led by the experienced Disha Kasat, riding on a reputation of being the defending champions. And it will be the experienced 35-year-old Komal Zanzad who will have the white ball up against the NECO's opening pair as we get up and ready for the second encounter of the Women's VPL. And joining me alongside in the commentary box is the man from Delhi, Suhas Vidam. Thank you very much, Yash. Love that intro. Man from Delhi. First ball. Lovely shape. Now the single is possible. No, it isn't. Only one of them is running. You got to love this intensity from the word go. Making the batters work for their runs. The intent is very clear. No easy runs whatsoever. Shivani Dhane, the left-hander, who's facing Komal Zanzad, the experienced campaigner, as I mentioned a while ago. That's it. That's the first wicket. Komal Zanzad strikes. And it is a big wicket in the form of Shivani Dhane. It was Tanvi Mende who did not commit any mistake. And NECO Master Blaster are one down in the very first over. She was getting a hinder swing earlier as well. That went according to plan. It's a very good catch. It actually was traveling towards her right, pouches it to perfection and brings the end of Shivani. The wickets column start to tick before the runs do for NECO Master Blaster. 0 for 1. Another बहुत ही जल्दी पहली सफलता in the middle. Orange Tigresses के लिए. Runs yesterday on the scorecard, but those 18 runs of 13 deliveries set the tone for them in the power play.
Another peach of a delivery from Komal Zanzar. ओहो, ये पहला चौका निको मास्टर ब्लास्टर के लिए। अरे निको वालों थोड़ा शोर मचाओ, पहली बाउंड्री तुम्हारे लिए। NECO Master Blaster, they're off the mark. Mentally, Snail still waiting for that middle of the bat delivery that she could hit. All said and done, Komal's got a very supportive captain here. Awarded with a slip after the first wicket. Not sure if the line is going to help in having the slip fielder throughout the over. But she's getting a hint to swing. They're not going to be devoid of action. The keeper is standing up for the moment. Now she drops back. And we have a flying slip in place. This is a very interesting field set. And including the flying slip and the conventional slip. 5 inside the ring on the offside for the righty. Played with soft hands for a single. Good running between the wickets as well. We were talking about Komal Zanzar and the experience that she brings in, the 35-year-old. She's been a part of India's T20 squad as well back in 2019 against England. Has played for RCB in WPL. And of course, Vidarbha's left-arm pace sensation. She has wealth of experience. There's no doubt about that. And so far, we have seen that as well. Should be mighty pleased, especially with the way someone with her craft has started. With a hint of swing, that lefty, Komal. 6 for 1 after 1. Sometimes when your partner is bowling well, the captain says, it's swinging. You get awarded with a slip too. Siddhi's all set. Will the slip come into play? 4 inside the ring on the off if you do not include the slip. Conventional third and fine leg. And fine leg will be in play. There's a hint of swing here as well. There's a hint of swing. Not extravagant swing that look good on television and YouTube, but hint of swing that'll kiss the outside edge. Just what you require to pick up a wicket. Always a good sight to see the ball moving around, keeping the batters on their toes throughout. Talking about this particular pair which is out in the middle, Shraddha Nabira and Snehal Maniyar, it's going to be extremely crucial for the NECO Master Blasters if they want to pose some sort of threat against the defending champions. Driven, and driven precisely as well. The two fielders were looking at each other because they knew one of them has to fetch it. Fielding's not an option. This is from the middle of the bat for Snehal. That's a shot
that'll give her the much needed confidence early on in the innings. Siddhi, she's got to be prepared to pitch it slightly in front of the batter to bring the slip in play. Snehal Maniar riding on the form. That little cameo that she played yesterday, which included 3 boundaries, was good enough to show the class that she possesses. Excellent delivery to follow up. And she'll have a experienced campaigner at the other end, the captain Nabira, who's been a prolific run scorer for Vidarbha in age group cricket. And she's coming into this tournament riding high on confidence, having been the highest run scorer in the Gazdar T20 tournament held in April. She scored more than 400 runs in 6 innings, which included a couple of centuries and 250s as well. Absolutely loving this, Yash. Absolutely loving this. Everyone watching as well without their notice. Oh, that's a very good throw. Still, she's made it. It might hurt her a little bit. Completing my point. Everyone watching as well. Little did we all know we've subscribed to the Kashikar Encyclopedia. Keep those tidbits on. It's good to see a challenge for even a single. That tells you the intensity is high. Good to see the intensity by both the teams, as you mentioned, Suhas. And a great initiative this by the Vidarbha Cricket Association, promoting women's cricket here, coming up with the 2nd season. And so far, it's been so good. I don't think Siddhi will be happy with the kind of shot that was offered. It tells the bowler that not only do I read that swing, I am very much prepared to play the second line and not the initial line. Plonking her front foot with great conviction there. Captain Shraddha Nabira. Shot of the day for sure. Down the ground for a massive 6. That is Shraddha Nabira's class for you. Incredible hit. Read the length early and also read the swing as she's always been doing in the over. 18 for 1 after 2. And Nabira has some big shoes to fill in. She's replacing Bharti Fulmali as the captain of NECO Master Blaster. Remember, Bharti is a part of India's World Cup squad. She's an inspiration for many, including at least one person in the commentary box. I can vouch for that. How did it miss Timber? It missed Willow too. This is the ball of the day thus far. We saw the shot of the day in the last over, and here's the ball of the day as well, as Suhas rightly mentioned. We were talking about Komal Zanzar. Zahir Khan is a cricketing idol, and I'm sure if Zahir Khan is watching this, he'll be mighty proud. Indeed. Not in control, but enough bat on that for that single. Recently met Meghna, who said Zahir Khan's my idol. And she also mentioned whoever makes Zahir Khan the idol very soon knocks on higher doors as well, because they have good idols. Komal, you're on the right track. Always a treat to the eyes, aren't they? The left arm pacers on song. And she's got a nice, smooth action, good pace, gets the ball to move around. And as you mentioned, Zahir Khan, of course, what an idol to have. Absolutely. Khan's class also comes because he's one step ahead of the batter all the time. Keeper comes up. You got to love this intensity once again. I'm saying this again because the keeper has come up. The slip remains where she should be conventionally. The batter's played it right back to the bowler, who in her follow-through turned and warned the non-striker that I will throw.
Dare you try and sneak a run. And this is very different from man cutting, remember. Another brilliant delivery from Zanzar has kept the batters on their toes, continuously asking them some questions, making sure she's not giving any room, any opportunity whatsoever for them to free their arms and play those big shots. Bang on the money so far, Komal Zanzar. Credit to Ridhima Mardwar as well. Was there to be pulled. And no second thoughts given. Perhaps the first error from Komal in this over, and she has to pay the price for it. Once again tells you the competitiveness we have in women's VPL. That was pulled away in style. Not the easiest of shots to play, mind you, but the batter made it look very easy at the end. And you expect that from her, don't you, Shraddha Nabira? She's so sensible. She also knows which way the wind is blowing. And she targeted that area too. Such an astute thinker of our sport, Shraddha Nabira. So much to learn for so many young girls and boys watching. End of the over. Very eventful over indeed. 3 gone, 25 for 1. The last time Orange Tigresses and NECO Master Blaster met in this tournament, in fact, the only game they've played was in the last season. It was a low-scoring match. Tigresses scored 105, yet won the game by 12 runs. And it was Trupti Lode who picked 3 wickets for 18 for Orange Tigresses, which helped them to clinch that game. At this point, it is Janvi Ranganathan, the left arm off spinner, in action for the very first time in this game. Up against Snehal Maniar. Driven away, but there is a fielder at the covers region. Maniar is another promising player from Vidarbha. She has all the potential to go big, to go and play at the higher level. And I'm sure she'll be eyeing some good score here tonight. That will be a wide, just drifting in a line in length. Janvi on this occasion. Left arm orthodox spin. Good to see. Always a treat to eyes if she gets it in the right areas. One thing that will work in her favor right now is that the wind factor has died down. So the batter really has to hit it hard and work hard for her runs in case she hits it aerially. She resets very quickly as well, much like Ravindra Jadeja. Uses her feet to perfection, but there is a fielder who will not make any mistake. Snehal Maniar, the dangerous one. She's being caught. Janvi Ranganathan strikes. And the Master Blasters are 2 down. Watch out for that celebration as well from young Janvi. Just when we were talking about the fact that power has to be used by Snehal because the wind factor has died down. Gets caught in the deep. In a bid to up the ante, to make the most of the power play, perishes in the process. This is a huge blow for NECO Master Blaster. Immediately catch it was the call.
She didn't have to move an inch there. The fielder. 1, 2, 3. Hot potato under control. Well done. Siddhi. Superb catch in the end. Worth another viewing for sure. 1, 2, 3. Oh, well done. Everybody in the frame, in the background, the NECO Master Blasters dugout. For a moment, they must have thought they're lucky enough. 1, 2, 3, as you mentioned, but eventually making sure she hangs on to it. And good to see so many young girls witnessing the game as well. I'm sure at least a few will get inspired to pick up the bat, and who knows, they might go on to play for Vidarbha and even for India eventually in the coming years. We've seen all the makings of a cricketer at the highest level. There's such good plans at work and great execution as well. Janvi Ranganathan. It's a very difficult craft, especially when you're playing T20 cricket. Despite that wide delivery, she's come back with a wicket and has given nothing away. Cut away, not too much benefit. Good effort in the field as well. So it's been a very good over, apart from that wide delivery that Janvi had bowled. Just one run in the form of an extra. Otherwise, she's been bang on the money. Ashwini has lots of real estate on the leg side to go for, but not if that's the line. He's taken that single. Good running. Usually it should be the non-striker's call, and that's what it was. End of the over. 4 gone, 27 for 2. Vedanti Salodkar, right arm off-break bowler for the first time in action in this game. Good to see spinners operating in the power play. So was the case in yesterday's game as well. Just shows that there is some sort of help on offer for the spinners on this surface at the VCA civil lines up against Ashwini. Will get the single straight away. Brings Shraddha Nabira, the skipper, on strike. Talking about Nabira, as I mentioned, she's been a prolific run scorer, highest run scorer in the Gazda T20 League since last 2 years. One of the promising talents rising from the ranks of Vidarbha. Showing respect to that good delivery from Vedanti. That's a quality of a experienced campaigner, Nabira. There's an interesting story to Nabira as well. I'll come to it after this delivery. The wind factor has picked up again. The fluttering jerseys are a giveaway. Upish, but very safe. In such good control. It's not an easy field. It's not easy to be on the field, especially in that area, because there are practice pitches. The ball will suddenly pick up pace from there. You've got to be watchful as a fielder in the deep in that region. Pulled away for a single. Now, as I was talking about Nabira, I was speaking to her personal coach, Mr. Pradeep Kumar Yadav, a couple of days ago, and he told me that Nabira's father, who is a chartered accountant, actually left a high-paying job in Oman just so that Nabira could pursue her cricketing career. Just shows for the sacrifices that parents make for their kids. Dot ball to follow up. Isn't that wonderful that stories are coming out now, and it's going to inspire many a parent as well to make sure
that they trust in the ability of their kids and let them pursue cricket. Magic can happen. 5 gone, 31 for 2. विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के सिविल लाइन स्थित इस बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक स्टेडियम में विदर्भा विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आज दूसरा दिन ऑरेंज टाइग्रेसेस और निको मास्टर ब्लास्टर्स के बीच में मुकाबला। जानवी रंगनाथन ये वाइड करार दी गई स्पिन आक्रमण पर ऑरेंज टाइग्रेसेस। स्क्रीन पर देखेंगे आप सब होनहार खिलाड़ियों के साथ में दर्शकों की तादाद बड़ी संख्या में। जी बिल्कुल, नया दिन नया मुकाबला, लेकिन मैदान वही ऐतिहासिक करीब 90 साल का इस ऐतिहासिक मैदान का जो इतिहास गौरवशाली है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस संघर्ष के साथ इसे सजाया संवारा उस पर एक बार फिर छोड़ दिया, पहले ही पीछे हट गई थी श्रद्धा। अगर हम इतिहास की बात करें तो किसी ज़माने में नागपुर सीपीएन बेरार से ताल्लुक़ रखता रहा। 1932-33 में इस स्टेडियम ने मूर्त रूप लिया सीपीएन बेरार क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में। इस बीच जानवी अपनी दूसरी गेंद, पहली वाइड, टॉस जीता ऑरेंज टाइग्रेसेस ने और पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया दिशा काजट ने, इस उम्मीद के साथ कि उनके पास पे जो बॉलिंग आक्रमण है वो बेहद मजबूत है, हालांकि बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है। और इसी बीच ऑन साइड पर खेल भर दिया, लंबे लंबे डग भरते हुए इत्मीनान के साथ में 1 रन अर्जित करने में, जोड़ने में सफलता। 33 दो खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अश्विनी 3 रन बनाकर, जबकि श्रद्धा नबीरा कप्तान 15 गेंदों में 17 रन बनाकर इस बार घुटनों के बल पर झुकते हुए लेग साइड में खेलने का प्रयास, सुरक्षात्मक अंदाज में, रन बनने का अवसर नहीं। छठा ओवर, श्रद्धा नबीरा कप्तान है निको मास्टर ब्लास्टर्स की, कल की जीत में बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी के साथ 4 रन। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चल रहा है, पावर प्ले की अंतिम गेंदें हैं और इस बीच निश्चित रूप से जब तक फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, श्रद्धा नबीरा ये जरूर चाहेंगी कि जितना हो सके स्कोर को एक्सेलरेट किया जाए। श्रद्धा आज बिल्कुल खूर कर बल्लेबाजी कर रही हैं, हालांकि 2 झटके भी निश्चित रूप से निको मास्टर ब्लास्टर्स को लगे हैं। अश्विनी के लिए जानवी खेलना चाहती थी अधूरे मन से, हालांकि बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। ओवर समाप्त हुआ तो कोमल झंझाड़ जो कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाज, उन्होंने गेंदबाजी का आक्रमण शुरू किया था और बहुत सफलतम गेंदबाजों में से एक रही। तजुर्बेकार, एक लंबा अनुभव उनके पास में, जहां तक विदर्भ की नुमाइंदगी करते हुए, हालांकि आरसीबी के लिए आईपीएल में खेलने का मौका। दिशा भी उसी प्रकार से है, अमरावती हमारे करीब का शहर, वहाँ की ये होनहार प्रतिभा दिशा कासट, दिशा और भारती ये दोनों अमरावती की पहचान है। अमरावती एक बहुत अच्छा, खेलों के लिहाज से बहुत अच्छा शहर, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल एक बहुत बड़ा संगठन, एक लंबा इतिहास
और इस बार उठाकर देखना है और ये एक लॉलीपॉप वेदांती सैल्यूट करते, हालांकि बहुत ऊपर नहीं खेल पाई, बाउंड्री के भीतर गेंद को आकांक्षा रिटर्न करने बहुत ही आसानी के साथ में अपने आप को ठीक से जज करते हुए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई और इसी प्रकार से ये एक बहुत बड़ा झटका, खास करके कप्तान के रूप में। बहुत बड़ा झटका है ये। देखिए किस प्रकार से उठाकर खेलने का प्रयास, हालांकि बाहों में पूरी ताकत का प्रयोग किया, लेकिन बाउंड्री लाइन से कुछ गज अंदर आकांक्षा ने किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं की और इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण बहुमूल्य विकेट श्रद्धा नबीरा के रूप में, श्रद्धा नबीरा ने 16 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। लेकिन श्रद्धा से विशाल हम उम्मीद कर रहे थे, कल जिस प्रकार से उन्होंने संकट मोचक के रूप में बल्लेबाजी की बागडोर संभाली थी और बहुत अच्छा स्कोर किया, सम्मानजनक स्कोर किया, जो बाद में चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। आज हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अच्छी बाहें खोलकर शॉट्स भी खेल रही थी। आखिर एक गेंद ऐसी आई जिस पर लालच जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाई और एक आसान कैच बाउंड्री लाइन के मिड विकेट बाउंड्री पर आकांक्षा रिटर्न करने लपक लिया। 7वें ओवर की दूसरी गेंद हल्के से मिडॉन में धकेला, 1 रन आसानी से हासिल करेंगी निहारी। अभी अभी क्रीज पर पहुंची हैं। एक बड़ा झटका श्रद्धा नबीरा के रूप में। जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, पिछले कल श्रद्धा ने जिस तरह से एक छोर से विकेट गिर रहे थे, दूसरे छोर पर श्रद्धा खड़ी रही और हालांकि अर्धशतक से जरूर कप्तान चूकी थी 2 रन से, लेकिन अपनी टीम को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वेदांती सालोदकर, एक विकेट इनके भी नाम आ चुका है और बड़े ही इत्मीनान से रिस्पेक्ट देते हुए वेदांती की इस गेंद को बिल्कुल कोई मौका, कोई रूम यहां पर अश्विनी के पास नहीं था। 9 गेंद में 7 रन पर पहुंच चुकी हैं अश्विनी। वेदांती फ्लाइटेड गेंद थी, गेंद के पिच तक नहीं पहुंच पाई, अधूरे मन से खेलने का यह प्रयास था। भाग्यशाली रही कि किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं, लेकिन बीट जरूर किया था वेदांती ने अश्विनी के लिए। वेदांती चर्च एंड से एक कदम आगे आते हुए डांस करते हुए खेल भर दिया था ऑन साइड पर। मिड विकेट और मिड ऑन के बीच से गेंद धीरे धीरे लुढ़कती भी पहुंचती क्षेत्ररक्षक के पास में, पर्याप्त अवसर 1 रन जोड़ने का। 7वां ओवर 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर मास्टर ब्लास्टर्स का ऑन साइड पर, लेग साइड पर खेल भर दिया। 1 रन पर संतोष करना होगा। 1 रन के साथ में ये ओवर भी मुकम्मल हुआ और 7 ओवर के समाप्ति के बाद में 40 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान के बाद, जो कि निको मास्टर ब्लास्टर्स का दूसरा सीजन और दूसरे सीजन में कल पहली जीत दर्ज की थी पगारिया स्ट्राइकर्स के खिलाफ। खाता खोला था इस विदर्भा विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर श्रद्धा की छोटी सी पारी पर डॉक्टर नजर दौड़ाएंगे, कदमों का अच्छा इस्तेमाल कर रही थी, सही तरीके से शॉट सिलेक्शन उनका अच्छा था। वो जो एक फ्लाइट डिलीवरी आई, एक लॉलीपॉप के, एक ललचाने वाला काम, खड़े खड़े उसको खेला मिड ऑन की दिशा में और मिड विकेट की दिशा में, कैच वहां पर थमा बैठी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूर इस वक्त मास्टर ब्लास्टर्स के लिए बड़ा नुकसान। इस विकेट की खूबसूरती यह है कि यहाँ टर्निंग भी है, स्पिन गेंदबाजों को मदद भी मिलती है। आर्या नंदनवार, पहला ओवर पहली गेंद,
केवल थकेला ऑन साइड पर मिड ऑन की तरफ गेंद जाती, क्षेत्ररक्षक को दौड़ कर आना पड़ा। 1 रन लेने का अवसर, अश्विनी 8 रन बनाकर अब स्ट्राइकर एंड पर। निहारी 3 गेंदों में 3 रन। पावर प्ले अब खत्म हो चुका है। आर्या नंदनवार स्पिन आक्रमण, विदर्भ की उम्मीद, विदर्भ का भविष्य इन्हीं होनहार खिलाड़ियों के हाथों में। ये गेंद बहुत ज्यादा फ्लाइट थी और खेल भर दिया था ऑन साइड पर। हालांकि फ्लाइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाई, आगे आकर खेला, लेकिन 1 रन पर ही संतोष करना पड़ा। 1 रन के साथ में 42 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। मिड विकेट की दिशा में धकेला, 1 रन आसानी से मिल जाएगा जब तक खिलाड़ी डीप से भाग कर आती हैं। निहारी 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर यहाँ पर पहुंची हैं और अश्विनी, देखिए निको की बैटिंग में डेप्थ है बिल्कुल। पिछले कल देखा था जब 5 विकेट्स गिर चुके थे, उसके बाद आर्या और नुपुर क्रीज पर आती हैं, 27 गेंद में 35 रन बोर्ड पर लगाती हैं और स्कोर जो है वो सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचता है। वो बड़ी एक, और इस बीच यहाँ पर बैक टू द बॉलर हाफ चांस, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल एक अवसर, लेकिन जब तक भुना नहीं पाती है टीम, उस चांस में अगर मगर का कोई भविष्य नहीं होता है। आर्या इस बार बिल्कुल बॉलर के करीब से, जमीन से लुढ़कती भी गेंद साइड स्क्रीन के पास। 1 रन 44 मास्टर ब्लास्टर्स। टॉस ऑरेंज टाइग्रेसेस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया था। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी हवा में उठी, पहले बाउंस पर गेंद को पॉइंट के स्थान पर फील्ड किया गया और इसी के साथ में ये ओवर भी समाप्त हुआ। तो इस 8वें ओवर के बाद में स्कोर 44, 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। विशाल ने नुपुर का जिक्र किया, कल की जो हीरो थी मुकाबले में वो नुपुर रही और नुपुर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी में भी उपयोगी साझेदारी, 6ठे विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी जो कि बहुत निर्णायक साबित हुई, और गेंदबाजी में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन। एक होनहार और अनुभवी ऑलराउंडर हरफनमौला खिलाड़ी है। विदर्भ की जो पिछले कुछ वर्षों का जो सफ़र है उसको अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं तैयार हुई है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ने खास करके महिला क्रिकेट को काफ़ी तरजीह दी और उन खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, एक इंडिपेंडेंट ग्राउंड उनके लिए उपलब्ध कराया और छोटी छोटी बच्चियां जिस प्रकार से खेल रही है, जैसे कि श्रद्धा की अगर हम बात करते हैं तो श्रद्धा भारत में ओमान में रहती थी। माता पिता जो है सीए थे ओमान में, और 8 साल की उम्र में माता पिता ने पहचाना श्रद्धा की प्रतिभा को और श्रद्धा ने 2 साल ओमान में क्रिकेट खेली। 10 साल की उम्र में जब अभिभावकों ने ये महसूस किया, माता पिता ने जब महसूस किया कि बेटी में एक अच्छे क्रिकेटर बनने की क्षमता है, तो उन्होंने त्याग किया। पहले मम्मी आई श्रद्धा के साथ में। टाइम आउट के बाद में खेल दोबारा शुरू होने की तैयारी में। 8 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। T20 लीग विदर्भा विमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा सीजन, आज दूसरा मुकाबला ऑरेंज टाइग्रेसेस और निको मास्टर ब्लास्टर्स के बीच में। आर्या नंदनवार बड़े आराम से उसको कट किया, पॉइंट की दिशा में 1 रन आसानी से मिल जाएगा। और इसी के साथ अश्विनी 10 के नीचे स्कोर पर पहुंची और अगर बात की जाए टीम्स को 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर सिद्धि नेरकर गेंदबाजी आक्रमण पर आई है।
मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि थर्ड आई टीवी के माध्यम से आप इस मैच का सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं। सिद्धि कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए निहारी ने गेंद को खेल पर दिया, शॉट थर्ड मैन की तरफ। अच्छी समझबूझ, बेहतरीन तालमेल, 1 रन अर्जित करने में कामयाबी। 9वां ओवर 46 रन अर्धशतक से महज 4 रन के दूरी पर निको मास्टर ब्लास्टर्स। ऑरेंज टाइग्रेसेस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए सिद्धि। बाहर रखा था गेंद को, हालांकि अंपायर की तरफ जरूर देख रही थी वहां पर अश्विनी की क्या वाइड का इशारा आता है, लेकिन अंपायर इंटरेस्टेड नहीं। डॉक्टर साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर, पिछले सीजन फर्स्ट सीजन की चैंपियंस रही हैं ऑरेंज टाइग्रेसेस, और अगर नीको की बात करें तो पिछला सीजन जो था वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं गया था। पिछले कल उस विजय अभियान की शुरुआत की है, तो किस तरह से इस मैच को देखते हैं? निश्चित रूप से एक चैंपियन होने का जो दबाव भी होता है वो ऑरेंज टाइग्रेसेस के खिलाफ, और पिछला सीजन चूंकि बहुत सामान्य रहा था, बहुत औसत रहा था, एक भी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाई थी निको मास्टर ब्लास्टर्स साथ में, कोई ऐसा दबाव नहीं था। लिहाजा कल जिस तरीके से पगारिया स्ट्राइकर्स के खिलाफ उन्होंने पहली जीत दर्ज की, और अब ये मुकाबला जो है उम्मीद करते हैं बेहद रोमांचक होगा। ऑन साइड पर मिड विकेट की तरफ तेजी के साथ में गेंद पर झपटी खेत रक्षक, और 1 रन इसी बीच दौड़कर पूरा कर लिया सिद्धि नेरकर। दाहिने हाथ की मीडियम पेस गेंदबाज। करीब करीब 5.5 का औसत है, और यहाँ से 3 विकेट गिरने का दबाव जरूर दिख रहा है नीको की टीम पर। उम्मीद इस वक्त यही है कि ये जोड़ी थोड़ी देर रुके। 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 48 रन बोर्ड पर लगे हैं, 3 विकेट गिर चुके हैं नीको के, और इस वक्त एक साझेदारी पनपते हुए थोड़ी सी अश्विनी और उनके साथ साथ निहारी के बीच, और इस वक्त नीको की उम्मीदें इन्हीं 2 प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के कंधों पर। आर्या नंदनवार गेंदबाजी का जिम्मा, स्पिन गेंदबाज। बहुत ज्यादा फ्लाइट, लेकिन और ये मिसफील्ड, और इसी के साथ ये चौका। इस मौके पर इस तरीके से मिसफील्ड का जो खामियाजा भुगतना पड़ा, जहां 1 रन वो मुश्किल बन सकता था। देखिए किस प्रकार से खेत रक्षक वो छकाती हुई गेंद सीमा रेखा के पार गई। उन 4 रनों के साथ में ये अर्धशतक भी पूरा हुआ निको मास्टर्स ब्लास्टर्स का। 10वां ओवर निहारी 10 रन बनाकर इस बार फ्लाइटेड ड्राइव ऑन साइड पर इत्मीनान के साथ में 1 रन अर्जित करने में सफलता। 53 3 विकेट के नुकसान पर निको मास्टर ब्लास्टर्स। दूसरा ओवर आर्या का, और एक बार फिर मैदान की दिशा में खेला, इसको धकेलते हुए 1 रन मिल जाएगा आसानी से। आर्या की अगर बात करें तो दूसरा ओवर चल रहा है, 9 गेंद अभी तक फेंक चुकी हैं। ज्यादातर इन्होंने फ्लाइटेड या फिर इसके साथ साथ फुल टॉस का भी इस्तेमाल किया है। वो जानते हैं कि इस वक्त निको किसी भी प्रकार का रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो डिलीवरीज हैं उनका कहीं ना कहीं सही उपयोग करने का प्रयास यहाँ पर आर्या का। मिड विकेट की दिशा में धकेला, कोई रन लेने का मौका यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। निहारी और अश्विनी के कंधों पर
पारी को सम्मानजनक स्कोर प्रदान करने की। गेंद के पिच तक पहुंची, स्पिन होने के बाद में पीछे हटते हुए बैकफुट पर जाकर खेल भर दिया सुरक्षात्मक अंदाज में। 54। 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद निहारी और अश्विनी इस बार ग्लांस किया, जबकि खेत रक्षक को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और इसी के साथ ये 4 रन। हालांकि गेंद की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन क्षेत्र रक्षक को बड़ी लंबी दौड़ लगानी पड़ी। फलस्वरूप 58। 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, और इस प्रकार से ये 10 ओवर के समाप्ति के बाद में 58 3 विकेट के नुकसान पर निको मास्टर ब्लास्टर्स। आगे का विवरण सुहास और यश। Cut away. There is protection in the circle, so she'll start off with a dot delivery. Arya Nandanwar. She's given away just 14 runs. In fact, it is Siddhi Nerka, beg your pardon, the new bowler. She's given away just 16 runs so far. Struck to the fielder at mid-off for a single. Good little partnership this between Niharika and Ashwini. They needed this kind of a partnership after losing their skipper. Hit towards the deep mid-wicket region for a single. Welcome back, Suhas. What do you reckon of this little spell of play that we have seen so far at the halfway stage? NECO Master Blaster, where do you think they're heading? They're heading in the right direction, yes. Anand is quite enjoying this game. He was very happy with the way women started off the league yesterday. Nicely done. The intensity on the field has been excellent as well. We've talked about the intensity overall, but what about on the field? The energy is rubbing off on others too. And to answer your question, as the crowd swells, the word is out that the best in the business are playing in the heart of Vidarbha. They would not look at 20 overs being the threshold. They would make smaller targets for themselves to play out a particular phase in a certain manner. Couple of runs there. No, she's got to stick to a single. Swoops in on the ball quickly. So now the plan would be to build a partnership up until the 15th over, then have the launch pad to go for glory. Absolutely. To go for glory, they need to have wickets back in the last 5 overs. And for that to happen, Ashwini and Niharika need to continue the way they're going so far. No need to take those unnecessary risks. Pulled away for another single in the same region. The deep mid-wicket region has been busy over the last 3 deliveries. At the end of 11 overs, Master Blasters are 63 for 3.
11 gone, 63 for 3. The captain is trusting spin on the surface. That's also because the spinners have delivered. Swept away first ball. Will have enough fuel to reach the fence. The dive goes in vain, but a statement is sent. Vedanti will still need another delivery to get settled. Ashwini on cloud 9. That was swept away in style by Ashwini. Just have a look at this. Got into the position quite early. Read the length of the ball. And then the fielder at deep square leg. She put in the dive. She put in all the hard work, but not too much benefit at the end. Vedanti Salotkar, she's been successful so far, apart from this first delivery. Cut away, but there is protection in the deep. You're mentioning about how cricketing action is going in the heart of our Nagpur is called as a central part of India, and right in the center of Nagpur is this beautiful VCA Civil Line Stadium. It's a historic ground, has witnessed some great international cricket matches in the past. Indeed, Chetan Sharmaji's hat-trick. If you're wondering why that comes first in my mind, he's very much contributing to Vidarbha cricket as a commentator in the men's tournament, VPL. Then, of course, Mr. Sunil Gavaskar's ODI century came at this ground as well. He also mentioned in between our stints that India-Australia game that you were here for as a kid. Cuts away, but there is a fielder at short third man. Komal Sanzar displays there. As you mentioned, Suhas, I remember watching my first international game here as an 8-year-old kid, sitting in the Billy Moria Pavilion. What an experience it was. From a kid to a commentator in the same ground, the life comes a full circle for Yash. Definitely, there's no doubt about that. A little dream, the little childhood dream has come true for me. And I must thank the VCA for this opportunity. They have a good eye for talent on and off the field. Excellent adjustment. She's peppering that area. This time she's more prepared there, the fielder. Vedanti Salotkar finishes a very eventful over. 8 of this one, 70 for 3 at the end of 12. Some tense faces there in the NECO Master Blasters dugout. Wondering why so tense at this point. They're not in a very bad position, are they, Suhas? Not at all. The partnership is brewing, and that's more important for the Master Blaster. They're getting momentum as well. They will build on this momentum, and with wickets in hand, they can go for at least 170, 180 on a surface where it's turning a little bit, can be proven as tricky. Now, Trupti, one of the most successful in the first VPLW. Can he replicate it? Now, can she replicate that? Is it an unwritten rule that if you're a spinner, just put your hand up now? The surface is offering something, and Captain Disha is looking out for you. I'm sure Disha is looking out for Trupti, because the last time they played against NECO, she picked 3 wickets, giving away just 18 runs. Another single on this occasion. We often hear, Yash, that it gets a little irritating for the spinner when they're swept away, but I think in this format, they've become immune to the sweep shot. No doubt. We've seen some very good sweep shots tonight, though, so far. Using her feet on this occasion, but excellent effort in a follow-through there by Trupti Lode. There's a reason why a bowler becomes the best fielder of their own bowling.
This is phenomenal. This will lift the entire team up. You're looking for moments like these to add pressure on the opposition. She's played on the onside for another single, but she's been so good so far, Trupti, adjusting her line and length. And as you mentioned, there is assistance on offer for the spinners. Traditionally, the surfaces here at Civil Lines have helped the spinners. Swept away once again to the fielder at deep square leg for a single. Very good over as far as Trupti is concerned. She's keeping the boundary ball away. Can she close it out well? Finishes with a dot ball. Superb over. 4 runs from it, 74 for 3. With 7 overs to go from here on, you would expect the batting side to at least add another 70 odd runs, which will take them above 140, which I reckon will be a good score on the surface. Yesterday, NECO defended 133 against the strikers. So they've got a very good bowling lineup as well. So anything in excess of 140, the NECO Master Blasters will back themselves to defend it. As we were looking at that scorecard, no matter how much we progress and we have the digital scoreboard, yes, we have that here too. There's something magical about a scorecard which this generation might call ancient. That's for, and the ease with which she has pierced the gap as well will make her feel much, much better. Akshara has got to look for the right length. Ask any batter in world cricket. The moment the ball hits the middle of the bat and the sound that the willow produces, which it did on the last occasion, they'll be extremely happy. Nothing in this world can give you more satisfaction than that. Very well said, Yash. And sometimes a batter gets that much needed confidence when he hits a boundary where the fielders are moving indeed, and it teases the fielder till the end. Ask Sunil Gavaskarji, he'll tell you. There are two kinds of boundaries. One where nobody moves an inch, you've pierced the gap brilliantly, it's racing away for 4. The other where you make the fielder run till the very last moment, keep them interested. They kept delaying the dive, and eventually the ball wins. That is more satisfying. What about you? Which shot would you prefer? Cross-batted for the moment as far as Ashwini's answer. I completely agree with what you said, Suhas. That gives much more satisfaction without any doubt. Talking about this partnership, that will make the Master Blasters very satisfied. They've already added 43, these two, Nihari and Ashwini. Predetermined, but it still works somehow. The keeper is fetching it from the fine leg fence. Nihari, for the moment, knows the field better than the opposition skipper. Predetermined, the pre-prepared scoop. Remember, Tilakratne Dilshan used to play that kind of a shot. Not really came from the middle of the bat the way she wanted to, but eventually will still give her 4 runs. At the end of the day, it doesn't really matter till the runs keep coming, no matter how they come. The NECO Master Blaster crowd enjoyed it. The secret to Nihari's success there was moving a little late and then adjusting. She still had to adjust. What did help her though is the fact that the ball didn't pitch at all. So that's one dimension less to worry about.
What do you reckon of shots like these in modern day cricket, Suhas? You know, if an old school coach is watching this, you know, when I used to play cricket as a kid, my coach told me to play in the V. If I played a shot like this, he would literally hit me. Two things here. In the air, but would she be able to get there? No, that's very far away. Tried her level best though. Arya Anandanwar had to take that split-second decision to stay back and take it on the bounce as well. We'll keep the chat alive. 14 gone, 86 for 3. Currently, the projected score says 123 if they keep on going at the same pace. Trupti Lode back in the attack. Swept away once again, but there is protection. No, Kasat, Disha Kasat, in fact, the captain of Orange Tigresses, she's aware of the fact that the batters are continuously using that sweep shot to their rescue time and again, and therefore she's got protection in the deep. What Disha would be worried about is this partnership which has reached a half century and in quick time. It's become one of the favorite areas. Oh, that's hurt her. What will hurt her even more is the fact that a run wasn't scored and the plan has been given away. Having said that, now Disha has a very good throwing arm. So she's worked out where to place which fielder. Once again, there is a fielder who'll make sure they'll only get, but they will in fact get 2 runs here. That is good running between the wickets. They'll make it look easy at the end, but it was the first run which was called for very quickly, and eventually they complete it with ease and grace there. Nihari and Ashwini just getting better and better with every passing delivery. Had to fetch it from outside off, but she had made her mind up that leg side is the place to go. Good work, but she had to get rid of the ball rather quickly. Tanvi Mende. Easier said than done. These are two very quick batters between the wicket, Nihari and Ashwini. And the fact that they understand each other, we couldn't even hear a call. It's all eye movements. It's working. Absolutely. You know, having that camaraderie always helps with your non-striker. So in the commentary box. I'm the non-striker. You're leading, brother. Using her feet on this occasion. Not too much benefit. It looked as if she was trying to go out of the ground for a moment, but no real timing to the shot, no real connection. In the context of the game, another very good over so far from Trupti Lode. Would love to see her be adventurous. Yes, use that feet. Gone! That is when something had to give, because for a long time, 1s and 2s were the only denominations we were seeing. The initiative was taken. I don't think the team will mind this wicket, because Ashwini has fallen prey to a very good delivery. Trupti Sanjay Lode was prepared for that catch in a follow-through. The partnership is broken. This is what pressure can do. You could sense something happening in this over. On this occasion, batter using her feet, but then Trupti making no mistake. Cotton ball by Lode. She loves to play against NECO Master Blaster, doesn't she? Years have rolled by. The jersey might have changed a little bit, but what doesn't change is the craft of Trupti. It's only getting better and better. That's a clean catch. Don't you worry. It's time to celebrate. 4th wicket down, 90 for 4. Right then, up in action for the first time in this encounter, Nupur Kole, the player of the match yesterday. She added crucial 17 runs at the back end of 14 deliveries, remained unbeaten and picked 3 wickets as well. She's definitely a player to watch out for from the Master Blasters.
Gets off the mark straight away. With at least 2 runs, she has to be quick. She will eventually get those 2 runs. That's the end of 15 overs. The Master Blasters are 92 for 4. अंतिम 5 ओवर और अंतिम 5 ओवर में गेंद और बल्ले के बीच में जबरदस्त संघर्ष देखने की उम्मीद। निको मास्टर ब्लास्टर्स 94 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद निहारी 33 रन 24 गेंदों में। एक अच्छी साझेदारी निहारी और अश्विनी के बीच में, जो कि 53 रनों की साझेदारी चौथे विकेट के लिए। महज 52 गेंदों पर बहुत बेहतरीन अंदाज में जानवी रंगनाथन, और इस प्रकार से खेल पर दिया। बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। निहारी की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी। शुरुआत में अपने विकेटों को सुरक्षित रखा। देखिए जोश किस प्रकार से निको मास्टर ब्लास्टर्स के कैंप में, समर्थकों में। 25 गेंदों में 37 रन बहुत जिम्मेवारी के साथ में बल्लेबाजी की है। केवल बल्ले का मुंह खोला थर्ड मैन की तरफ। काफी लंबी दौड़, सफलता नहीं। बाउंड्रीज के लिए एक अवसर, और इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट के स्थान पर तेजी के साथ में शतक की तरफ बढ़ती हुई निको मास्टर ब्लास्टर्स। कल की जीत से निश्चित रूप से उत्साह। पगारिया स्ट्राइकर्स के खिलाफ दूसरा सीजन, कल की पहली जीत थी कुल मिलाकर। नूपुर कोहले, जो कि कल की जीत की शिल्पकार कही जा सकती है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहानी पिछले कल से बिल्कुल अलग यहाँ पर, कि पिछले कल से 1 विकेट कम यहाँ पर खोया है निको ने, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि अगर देखा जाए, और ये देखिए नूपुर ने कट किया उसको। आउटफील्ड इतना तेज है कि आपको 2 रन लेने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा अगर फील्डर इंतजार कर रहा है बाउंड्री के पास गेंद का। जानवी रंगनाथन तीसरा ओवर लेकर अपना आई हैं। 14 रन अभी तक खर्च किए हैं, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। निहारी, निश्चित रूप से आपने सही कहा, तारीफ करनी होगी आज इस युवा बैटर की, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस इनिंग को बिल्ड किया, इस साझेदारी को देखिए, बिल्कुल स्वीप किया उसको, और एक बार फिर 4 रन। और आज निहारी ने गेंद को हर मैदान का हर छोर दिखाया है, चाहे वो फाइलक की दिशा हो, चाहे वो पॉइंट का एरिया हो, चाहे थर्ड मैन एरिया, या फिर कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने की बात हो। विशाल, ये T20 वाला शॉट है। हालांकि इसमें जोखिम भी होता है, लेकिन कहा जाता है जो साहसी खिलाड़ी होते हैं भाग्य उन्हें मदद भी करता है। जानवी की इस गेंद पर निहारी ने गेंद टैप किया, लेकिन खेत रक्षक चौकन्य किसी प्रकार से रन बनने का अवसर नहीं। शतक पूरा कर चुकी है निको मास्टर ब्लास्टर्स। निश्चित रूप से यह अंतिम जो 4 ओवर, सभी 4.1 ओवर बाकी है। जबरदस्त संघर्ष, और ये देखना है पहले बाउंस पर मिड विकेट के स्थान पर, लेकिन अवसर केवल 1 रन बनाने का मिलेगा। और इसी के साथ में ये ओवर समाप्त हुआ। तो 16 ओवर के समाप्ति के बाद में निको मास्टर ब्लास्टर्स 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन। बिल्कुल, आज निहारी ने अपने कंधों पर पूरी जिम्मेदारी को लिया है और उसे निभा भी रही है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का ये समय, और निश्चित रूप से दोनों कैंप्स जुटेंगे, और ये अगली 24 गेंदें कहीं ना कहीं तय करने वाली हैं इस मैच की दशा और दिशा को। निको चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले कैंपेन का शुरुआत जीत के साथ किया था, और आज मुकाबला जिनके साथ है वो पिछले सीजन के चैंपियंस हैं, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ आज अपने दूसरे ही मैच में निको बैक टू बैक दूसरे दिन विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन
तो मैच ऑन 16 ओवर्स के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 103 रन और आज काफी हद तक मोमेंटम जरूर नीको के हाथ में रहेगा। डॉक्टर साहब 24 गेंदें, क्या प्रेडिक्शन रहेगी यहां से? निश्चित रूप से भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन जो भी होगा वो रोमांचक होगा। तृप्ति गेंदबाजी के मोर्चे पर इसी बीच 1 रन अर्जित करने का मौका। 16 ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। 104 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद में तीसरा ओवर तृप्ति का 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। किफायती गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए नुपुर कोहले, अनुभवी बैटर, सामने की तरफ गेंद को खेल भर दिया। कवर्स में फील्ड होती गेंद, इतना समय था तेजी के साथ में 1 रन जोड़ने का। 105 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद निको मास्टर ब्लास्टर्स। निहारी पर जरूर आज नजर रहेगी क्योंकि और ये उठा दिया है हवा में खेला हुआ शॉट और मिड विकेट की दिशा में कोई गलती वहां पर नहीं करेंगी फील्डर और महज अपने 6 रन से अर्धशतक से चुकी है निहारी। जो संघर्ष किया टीम को यहां तक पहुंचाने में, निश्चित रूप से यहाँ पर डॉक्टर साहब गियर चेंज करने की जो बारी थी वो निहारी की थी और अपना काम वो यहाँ पर कर चुके हैं टीम के लिए। अब यहाँ से नुपुर और उसके बाद आने वाली शायद आर्या, क्योंकि पिछले कल इन दोनों ही खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 27 गेंद में बहुमूल्य 35 रन जोड़े थे। हालांकि आज इन दोनों के लिए 21 गेंद यहां पर बची होंगी और कितना ये टीम के स्कोर को आगे बढ़ा पाते हैं, कितना डोमिनेट करते हैं गेंदबाजी को, ये जरूर यहां पर देखने वाली बात रहेगी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई और बड़ी जिम्मेवारी निभाने के बाद में हालांकि महज 6 रन से अपना अर्धशतक से चूकी निहारी, लेकिन एक बेशकीमती पारी खेली है। और इसके बाद में आपके पास में कोई अवसर नहीं होता। जिस प्रकार से आपके पास गेंदें हैं शेष बची हुई, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने का प्रयास होता है। और आप जब जोखिम लेते हो तो उसमें दोनों प्रकार की संभावनाएं रहती है। और आखिरकार ये शॉट जो खेला था निहारी ने, वो हालांकि हवा में गेंद को रखा और क्षेत्ररक्षक के लिए कोई खास परेशानी नहीं हुई। तृप्ति लोंडे के खाते में ये दूसरी सफलता। बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी, महज 13 रन, तीसरा ओवर और 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाबी। ऑरेंज टाइग्रेसेस जो कि पिछली बार की चैंपियन टीम है, जाहिर तौर पर इस मुकाबले में जीत के साथ में अपना अभियान शुरू करना चाहेगी। ऑरेंज टाइग्रेसेस दिशा कासट की कप्तानी में, और कल अपने पहले मुकाबले में, आरंभिक मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद में निको मास्टर ब्लास्टर्स के खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद है। लिहाजा हम ये जरूर कह सकते हैं कि मुकाबला आखिर तक रोमांचक होगा। और विकेट को देखते हुए यहाँ स्पिन गेंदबाजों ने कल भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। नुपुर जो कि मुकाबले की आर्किटेक्ट रही थी निको मास्टर ब्लास्टर्स के लिए, और आज तृप्ति लोढ़े जो कि बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी कर चुकी है फिलहाल तीसरे ओवर में। तृप्ति की तारीफ यहाँ पर जरूर करनी होगी। तृप्ति लोढ़े जिन्होंने तीसरा ओवर यहाँ पर उनका चल रहा है और काफी प्रभावित किया। 2 विकेट्स अभी तक जो है वो निकाल चुके हैं। हालांकि उनका दूसरा ओवर जरूर महंगा गया था अगर बात की जाए, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं एक बार फिर डोमिनेट करने का प्रयास हुआ। नुपुर स्ट्राइक पर नजर रहेगी आज फिर से नुपुर पर, क्योंकि पिछले कल नुपुर ने जिस तरीके से पारी को बिल्टअप किया था, साझेदारी बनाई थी, टीम को 133 पार पहुंचाया था, और आज भी अच्छा मौका उनके पास। और एक बार फिर से मिस कर गई और इसके साथ ही बड़ा झटका लगते हुए निको मास्टर ब्लास्टर्स को नुपुर को जाना होगा पेविलियन वापस। महज 3-4 रन यहां पर बना पाई, 4 गेंद का सामना किया। बल्ला शायद छूट गया था हाथ से और इसके साथ ही कहीं ना कहीं बड़ा झटका।
नूपुर ने बहुत आगे आकर शॉट खेलने का प्रयास किया, काफी दूर रह गई थी घर से और कोई अवसर नहीं था वापस लौटने का, और इस प्रकार से ये आर्या जो कि बगैर खाता खोले पवेलियन लौट चुकी है। आर्या जो कि बल्लेबाज के रूप में आई है और नूपुर ने जो कि उम्मीद थी काफ़ी एक लंबी पारी खेलने की, कल जिस तरीके से पारी को बिल्डअप करने की कोशिश की थी आज सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि इस प्रकार की स्थिति स्लॉग ओवर्स में तेजी के साथ रन बनाने की चुनौती होती है, लेकिन तृप्ति की तारीफ करनी होगी कि तृप्ति ने अब तक 3 सफलताएं अर्जित की है महज 13 रन खर्च करके। और ऑरेंज टाइग्रेसेस जो कि अब निश्चित रूप से रोकने में सफल रही है, जहां तक निर्णायक ओवर्स की बात है 17वां ओवर 5 गेंदें हो चुकी है और नई बल्लेबाज नई बैटर आर्या, और कोई संपर्क वहां पर गेंद और बल्ले का नहीं था। 17 ओवर्स समाप्त, 106 रन 6 विकेट के नुकसान पर निश्चित रूप से जिस तरीके से करीब करीब 15 ओवर तक नीको मास्टर ब्लास्टर्स की पारी चली, एक बड़ी उम्मीद यहां पर थी, लेकिन 2 झटके यहां पर लगते ही एक बार फिर मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है और निश्चित रूप से पिछले सीजन की चैंपियन ऑरेंज टाइग्रेसेस प्रभावित करते हुए यहां पर बताया कि क्यों पिछले सीजन वो चैंपियंस यहां पर रही हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक चैंपियन टीम जो पिछली मर्तबा की है इस बार भी अपनी गिरफ्त मजबूत करने का प्रयास करती हुई गेंदबाजी के मोर्चे पर कोमल झज्जाड़ जो कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाज और ऐसे निर्णायक मौकों पर कोमल जैसी धाकड़ गेंदबाज के पास में ये अवसर, और इस प्रकार हवा में उठाकर खेला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। अब सवाल है, खेलना चाहती थी सामने, गेंद ने बल्ले का थोड़ा बाहरी हिस्सा लिया और 4 रन, सवाल 4 रनों का है। अब यहाँ से हर गेंद पर ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास होगा। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, कोई अवसर नहीं खेत रक्षक के लिए। 110 18वें ओवर में कोमल दिया के लिए। ओह पिच गेंद थी, हालांकि पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई, खेला लेकिन अधूरे मन से, रन बनने का अवसर नहीं दिया। 5 रन बनाकर, जबकि आर्या को अपना खाता खोलना बाकी है। कोमल झंझाड़ बाएं हाथ की तजुर्बेकार गेंदबाज, लेकिन इस बार ये देखना है बहुत ही बेहतरीन शॉट मिड ऑफ बाउंड्री की तरफ। हालांकि गेंद हवा में निश्चित रूप से कुछ समय तक रही, लेकिन खेत रक्षक को काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी। ओवर पिच बनाकर बहुत ही अच्छा शॉट था, अपनी बाहें खोलकर इस बार ये प्रहार किया। 114 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 18वें ओवर में दिया के लिए कोमल ऑफ स्टंप के बाहर थी, सफलता नहीं मिली, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाई दिया। डॉट बॉल, 2 चौके अब तक इस ओवर में लग चुके हैं, जो कि बेशकीमती है। 9 रन बनाकर दिया 5 गेंदों का सामना करते हुए 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 114। सीधे खेला, हर मिसफील्ड फंबल जरूर हुई हैं, 2 रन लेने का मौका। कोमल के इस ओवर की 5 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। कोमल झांझड़ जो कि निश्चित रूप से अनुभवी गेंदबाज हैं और
आरसीबी में भी उनका काफी दबदबा रहा है और बाएं हाथ की इस गेंदबाज के सामने जिस तरह से दिया ने आज बल्लेबाजी की है, रन्स आने चाहिए निको मास्टर ब्लास्टर्स के लिए, चाहे वो जैसे मर्जी आए। पहली इनिंग अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ते हुए 18वें ओवर की अंतिम गेंद 116 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में उसको धकेला, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। 4 रन 120 के स्कोर पर पहुंच चुकी है निको मास्टर ब्लास्टर्स इस चौके के साथ, और दिया फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हुए अपनी इस बल्लेबाजी। अठारह ओवर की समाप्ति के बाद में 120 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद निको मास्टर ब्लास्टर्स निर्णायक 12 गेंदें अभी बाकी हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि दिया और आर्या की जोड़ी, हालांकि आर्या को अभी तक अपना खाता खोलना बाकी है, उन्हें मौका भी नहीं मिला बल्लेबाजी का, अब तक केवल एक गेंद खेली है। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो कल जैसा ही स्कोर 133 रन कल भी बनाए थे पगारिया स्ट्राइकर्स के खिलाफ, देखना है उससे ज्यादा बनते हैं। तृप्ति फिरकी गेंदबाज और हवा में उठाकर खेला है, और ये चौका बहुत ही खूबसूरत चौका, मौके को भुनाते हुए तृप्ति लोढ़े जो कि दाहिने हाथ की ऑफ ब्रेक गेंदबाज, सफलतम गेंदबाज, 3 विकेट अर्जित किए। 13 रन इस ओवर के पहले उन्होंने दिए थे, लेकिन अपनी पहली ही गेंद पर चौथे ओवर की ये चौका गया। चौके के साथ खाता खोलती हुई आर्या और सामने तृप्ति जो कि सफलतम गेंदबाज रही हैं अभी तक ऑरेंज टाइग्रेसेस की। एक बार फिर से कट किया उसको, फील्डर मौजूद, लिटिल फंबल, लेकिन आराम से वापस गेंदबाजी छोड़ की तरफ गेंद को फेंकेगी। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा यहां पर आर्या को। अब दिया तृप्ति का सामना करेंगी। मुकाबला यहां पर जो वो कहीं ना कहीं रोमांचक होते हुए, हालांकि पहली ही इनिंग है, लेकिन ये यहां पर जरूर देखना होगा कि क्या पिछले कल के स्कोर से पार पाती है निको, या फिर जो प्रोजेक्टेड यहां पर दिखा रहा है वहीं पर रह जाती है। बल्ले का मुंह खोलते हुए ड्राइव किया कवर्स में, 1 रन पर संतोष, 1 रन के साथ में स्कोर पहुंचा 126। 9 गेंदें बाकी है इस पारी की, महत्वपूर्ण 9 गेंदें। तृप्ति 19 रन देकर 3 विकेट अर्जित करने में कामयाब। दाहिने हाथ की गेंदबाज और इस बार उठाकर खेला है, और इसी के साथ ये छक्का, बहुत ही निर्णायक मौके पर ये छक्का आया है। और कम से कम विशाल, अब हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि कल का जो स्कोर था उससे तो ये बड़ा स्कोर बनने जा रहा है। 132 निको मास्टर ब्लास्टर्स, बहुत ही सही शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर, पहला बाउंस, और इसी के साथ में 132 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद आर्या जो कि 4 गेंदों में 11 रन अब तक बना चुकी है। 1 चौका और 1 छक्का इस ओवर में उन्होंने जड़ा था। तृप्ति के आंकड़े जरूर यहां पर खराब कर रही हैं, और देखिए सिंगल यहां से जरूर आएगा। तृप्ति के इस ओवर में 13 रन 5 गेंद में आ चुके हैं, और 3 ओवर्स में 13 रन तृप्ति ने यहां पर खर्च किए थे, 3 विकेट्स हासिल किए थे, लेकिन चौथे ओवर में 13 रन अभी तक, 1 गेंद अभी भी शेष। तो कुल मिलाकर निको की इन बल्लेबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी। एक बार फिर से मिड ऑफ की दिशा में खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। वो जो शॉट यहां पर खेला था बिल्कुल तृप्ति के सिर के ऊपर से, एक सेफ जोन, स्ट्रेट ड्राइव, और वो छक्का बेहद खूबसूरत। मानिए लूप पर लगाइए और देखते रह जाइए। बहुत ही बेहतरीन छक्का था। तो 133 रन और अभी 6 गेंदें बाकी है। पगारिया स्ट्राइकर्स के खिलाफ 133 रन बनाए थे अपने पहले मुकाबले में, जो कि लीग का आरंभिक मुकाबला रंगारंग उद्घाटन समारोह के बाद में खेला गया था। अब ऑरेंज टाइग्रेस की शेरनी कोमल झंझा, माफ कीजिएगा, वेदांती अब गेंदबाजी के मोर्चे पर। छोटा सा बॉलिंग रन अप,
134। एक 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद वेदांती 5 गेंदें बाकी है और इस बार बहुत ही उठाकर शानदार अंदाज में मिड विकेट के क्षेत्र में ऊपर से खेला 6 रन के लिए। आकर्षक बल्लेबाजी, बेहतरीन शॉट, 141 का स्कोर, आकर्षक बल्लेबाजी का नमूना। गेंद को पिच के बाद में बहुत खूबसूरत अंदाज में ऑन साइड पर मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का जड़ा। 141 रन, अभी भी 4 गेंदें बाकी है। वेदांती और इस बार फिर ऑन साइड पर खेला है और इसी के साथ ये चौका। लगातार चौके और छक्के, बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी आर्या और दिया की तरफ से। 7 गेंदों में, महज 7 गेंदों में 22 रन, छक्के और चौकों की बरसात के साथ में अपने आप को स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए एक टिपिकल मिड विकेट की तरफ खेला गया ये शॉट। और 145, अभी भी 3 गेंदें बाकी है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक लुत्फ उठाते हुए आर्या और दिया के बल्लेबाजी का वेदांती के सामने। अब आर्या 7 गेंदों में 22 रन और इस बार चूंकि शॉट खेलना चाहती थी, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई और इस प्रकार से ये आर्या की पारी का समापन 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन। हालांकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की और महज 7 गेंदों में 22 रन बनाए और टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर के करीब पहुंचाया। बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में आई और गेंद स्टंप्स पर थी और इसी के साथ में ये बोल्ड आउट हुई। आर्या अपना काम कर चुकी है डॉक्टर साहब, और जिस तरीके से इस पारी को घुमाया है 145, 2 गेंद अभी भी शेष है, यानी कि कुल मिलाकर अभी भी मौका है 150 पार पाने में। और जिस तरह से ये पिच, यहाँ पर पिच निकल खेली थी, जिस तरह से वो मैच लास्ट में घूमा था जाकर, आसान नहीं होगा 150, क्योंकि डॉक्टर यश ने भी पिछली बार कहा था, पिच निकल कहा था कि थोड़े से रन कम जरूर यहाँ पर नीको के बने हैं, लेकिन गेंदबाजी में जिस तरह से वापसी की थी, जिस तरह से गेंदबाजी में उन्होंने आक्रमण किया था, बगाड़िया स्ट्राइकर्स को बिल्कुल बैकफुट पर नहीं धकेला, बिल्कुल मैच से आउट कर दिया था। वेदांती आखिर 2 गेंदें और यशस्वी नई बैटर। इस बार फ्लाइटेड थी, पहले बाउंस पर मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में 1 रन जुड़ पाया। 146 अंतिम गेंद और देखना है 150 बन पाते हैं या नहीं, चौके की दरकार होगी। और इस बार उठाकर खेला है और इसी के साथ ये 4 रन और 150 का लक्ष्य, 150 रन का स्कोर बनाने में सफलता निको मास्टर ब्लास्टर्स की टीम के लिए। 150, 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पिछली बार की चैंपियन ऑरेंज टाइग्रेसेस ने टॉस जीता, कप्तान दिशा कासट ने, और पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है निको मास्टर ब्लास्टर्स की तरफ से, बहुत ही शानदार। दिया 22 रन बनाने में कामयाब रही, नाबाद रही 11 गेंदों का सामना करते हुए। और निको मास्टर ब्लास्टर्स 150, 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद ऑरेंज टाइगर
Mission 151 will begin soon for the Tigresses. The NECO Master Blaster would believe they've got enough on the board, especially because this wicket has a bit of turn. And NECO Master Blaster have the spinners to get the job done. That makes the start even more important for the Tigresses. Can they ace the power play before they move on to the middle overs? I'm Suhas Vedam, joined by Yash Kashikar. Very warm welcome. Thank you so much, Suhas bhai. As you mentioned, mission 151. For that mission, for the Orange Tigresses, the defending champions, the opening batters, the captain, the experienced campaigner Disha Kasat, alongside Akshara Itankar. They'll have their task cut out. Make sure this is not an easy score to chase on the surface. They'll have to bat out of their skins to chase this one, because NECO Master Blaster definitely have a very strong bowling lineup. And to kickstart the proceedings for them with the ball is Arya Gohane, the pacer. Arya played a handy knock towards the later part of the innings for the Master Blasters, giving them that finishing touch, helping them to reach the figures of 150. Just making sure everything is in place before we get things going in this run chase. The defending champions locking horns with the NECO Master Blasters. It is Arya Gohane up against the skipper Disha Kasat. Starts off with a wayward delivery wide and a single sneaked off as well. Poor delivery to kickstart the proceedings from Arya. Still getting warmed up. That's with the ball in hand. Don't worry with the bat. She was phenomenal. If the NECO Master Blaster entertain thoughts of over 130, that's only because of Arya Gohane. And they reach the psychological total of 150. Slip in place. And swing on display. Has to be a phenomenal batting effort, and that's exactly why this game is going to be one to watch out for. The Tigresses have the batters to get the job done. They will be technically challenged by the amount of swing in the air and the amount of spin off the surface. It cannot be a straightforward run chase. Surely this battle between bat and ball is something that you will savor. Stay tuned. Off the mark there, Akshara. First runs off the bat for the Tigresses. Talking about their skipper Disha Kasat, she was the player of the tournament last season, so all eyes will be set upon her. If the Tigresses want to defend their crown, it will be very important for Disha Kasat that she stays there in the middle for as long as possible, not just in this game, but also going forward in the tournament. Watch out for that inside-out shot as well. Very watchful, Disha. And the throw doesn't come in. Off the mark, skipper Disha. Arya Gohane is getting such lovely swing as a slip fielder. One would be very interested, because it's just a matter of time, especially if the batters are new to the crease, that a mistake is waiting to happen. It's a matter of time before you find the edge. They're playing the ball late, just the way it's supposed to be, in swinging conditions. Rightly being watchful in the first few overs, first few deliveries. We saw movement when Komal Sanzar was bowling as well. So there is something on offer for the pacers as well, if you pitch it in the right areas and if you have the ability to move the ball around. Arya Gohane so far has kept things quiet, has kept things tight.
Good thinking this by Akshara. Taking a step forward, not too much, but taking a step forward to negate the swing. And also opens up a different angle to play that shot with ease for a single. Puts doubts in the mind of the bowler as well as to what could be a good length, because the batter has started to step out a little. Always a good strategy to just dance down the track a little and confuse the bowler with a length. Cut away in style. That is a shot of a very smart cricketer from Disha Kasat. Ends the first over with a handsome looking boundary. Terrific shot indeed, 9 for no loss. Once again playing it very, very late and guiding the ball. Not trying to hit it hard at all. Utilizing the pace offered by the bowler. 9 for no loss. Just tells you that not every ball need to be hit hard. Sometimes just opening the face of the bat, waiting till the very last and then guiding the ball using the pace as you mentioned helps as well. Traditional shots, but all is gold. I think in today's cricket, the right mixture of being unpredictable at the same time using orthodoxy is going to help for a batter. In the power play, it's more about the connection that you make, because only 2 men or 2 women in this case can patrol the boundary rope. Slip in place. It's always heartwarming to see a slip in place when a spinner is getting introduced, because it tells you that the captain trusts the spinner so much and her skill. Is there an edge? Is there an edge waiting? There is, as per the keeper, and there is, as per the umpire. The finger has gone up. What a catch by the keeper. Excellent catch. And Nupur Kole continues a juggernaut. She was the player of the match yesterday, having picked 3 wickets. And right off the first delivery in the second game, she makes sure she gets the breakthrough for the Master Blasters. Nupur Kole is on fire. No mistake whatsoever from Niharika Wale. Niharika Wale, not easy to take that. It did turn, yes. There was just a bit of bat. She heard it loud and clear. And the umpire was convinced by the decibel levels too. Immediately went up. The ball went further away. Now, in hindsight, she wouldn't have played that shot at all. That's a very good catch. Very difficult to say if there was a big deflection. I don't think there was a big deflection. The umpire has gone with the chip that he would have heard. Also, the batter knew it straight away. Just the expression on her face. She knew she had played the wrong shot and probably she had nicked it. That's why she just looked behind the moment she played the shot. So many things that could be a giveaway. That's why our game needs a psychologist as well. Our game needs that. Slip in place still. Why not? You tell me it's not colored clothing, I'll believe you. Because the lengths are such, the field is such. Batting is not easy on this surface. Unless and of course, your name is Arya Gohane. Once again off the back for another appeal and another wicket here. It's almost an action replay. Nupur Kole. What a bowler she is. Already 5 wickets in the tournament for her now. Trial by spin continues for the Tigresses. The Master Blaster are elated with the start. Nice loop. This one didn't turn much, but did take the outside edge. Another fantastic catch. The Kole keeper combo continues to bear fruit for the Master Blaster.
Another one bites the dust. It's 9 for 2. Wicketkeeper Riddhima Maradwar caught by the wicketkeeper. And that brings Tanvi Mende in middle. They need to stitch in a partnership here, Mende and Disha. This over says, wow, that's what it's been. Once again played off the back foot. She's been brilliant with the ball, hasn't she been? Nupur Kole. 3 wickets yesterday, 2 already in the very first over. Testing the batter. In fact, there's an overthrow which has gifted them a run. Or is it? No, there's some sort of confusion. Tanvi and Disha thought they were being cheeky as they went for the run. Umpire signal dead ball. Come back to strike. Tanvi takes strike. In the air, put down. That was so close to being another wicket. We're still moving towards a double wicket maiden. Shreya pouncing towards it. That would have been a fabulous catch had it stuck. A very good effort from Shreya Lanjewar. Once again off the back foot, this time in the gap for a single. A lot of shots and almost all the shots in this over were played from the back foot. After 2, the Tigresses are 10 for 2. What an over this was. Great captaincy as well by Shraddha. Threw the ball to one of the best in the business. More wickets than runs in that over. She's kept it tight by doing simple things right. It's a typical spinner's wicket. Not just the first one, both of them. And you got to give credit to the keeper as well, Nihari Kawale. Had that catch been taken by Lanjewar, imagine. That would have been a huge blow to the Tigresses. Here's the vice captain Arya Gohane. Another excellent delivery from Arya. She caught the ball to move around. Even though she went for 9 runs of the first over, she asked the right questions to the batters. She's got all the ingredients, all the qualities that are needed to become a top-notch fast bowler. Is the ball not swinging as much? Because to Tanvi, who's still new to the crease, the slip is not in place. Would have missed leg stump, and that's exactly why the umpire didn't entertain that appeal. On that last occasion, she did get the ball to move in a little. Arya, good to see the captain walking up to her straight away. It's the captain-vice captain combination. Yash Arya's got her plans clear. She wants to make the batters drive, and that's what you do, especially when you're getting a hint to swing. This time played on the onside for a single. That brings Disha back on strike. A lot will depend on how Disha plays from here on for the Tigresses. Having lost 2 early wickets, she'll have to steady the ship here. Absolutely right. Testing time for the Tigresses. Captain needs to be a calming effect as well. She needs to curb that required rate so that it doesn't go out of hand. All while maintaining a particular run rate, especially in the power play. You cannot be playing catch-up cricket in the middle overs because you blocked out many in the power play. Yes, 2 wickets have fallen, but optimism is the key here. That's much better from Arya.
the previous delivery. It bounced up until hip height, but unfortunately the line changed. It ended up being leg side-ish. An easy single was available thereby. For Disha, she's bang on the money. Rightly mentioned, Suhas, you can't play the catch-up game in the middle over. So it will be very interesting to see the approach of Disha Kasat from here on. She needs to be cautious. At the same time, she needs to get those runs as well in the power play, using the field restrictions that are in place. Yes, she's being watchful. She's being watchful because she needs to look at 11 for 2. Not because she cannot hit that ball. She would have tried to go inside out, or she could have driven it through covers, something that she loves doing. But remember, Disha also will be calculating that she's a good player of spin because she's got the power to clear any boundary in the world. And she hasn't played spin yet. She's only been handcuffed to the non-striker's end when spin was taking wickets. So she's got to pick and choose the bowlers she'll be going after in order to conquer 151. Another brilliant ball to finish off what was an excellent over. Just a single from that after 3. The Master Blasters have made sure they keep Tigresses to 11. So they back came Kritik, right? No, yeah, they back came Kritik, then Janvi is the next. They came back. Nupur Kole, an economy rate under 6. Just shows how good she is with her line and length. Always asking the questions. And she's been phenomenal since yesterday's game. Just has got better and better, I feel, with every passing delivery. Just the way she's tossing the ball, inviting the batter. The difference between the two sides thus far is, especially the spinners, it's been the fact that every time the Master Blaster went for a sweep shot, they returned with at least a run. Here, Nupur has blocked that area. You expect that to be the case in the power play as well. You have a square leg in place, especially if you're targeting outside off. What I like about Nupur is the fact that she gets through the overs quickly, doesn't let the batter settle down in terms of the mind. Very quickly, you have to face the next delivery. As a batter, not easy. Swept away once again. This time, it will run away towards the fence. That was struck with ease and grace from Tanvi Mende. Excellent shot. Now, if I were Tanvi, I would know that I've taken an additional bit of risk. If I were Nupur, I wouldn't mind this shot at all, because that was swept from the middle stump, making the batter a candidate for LBW, and if she misses it completely, bowled as well. You're bringing two different varieties of getting a wicket. The batter had to work hard for her runs. On that occasion, you got to tip your hat off and say, Tanvi, well played. But the plan is clear for Nupur, but a welcome boundary, of course, for the Tigresses. They needed that boundary desperately. Since the last 11 deliveries, they've only scored 5 runs. Had that boundary not come, it would have only been a single. Punched off the back foot for a single. 4 overs are done and dusted. The Tigresses are 16 for 2. Good to see fans in action at the VCA civil lines here. NECO Master Blasters have made sure they've got a lot of people supporting their side here. Even the men's side of the Orange Tigers was here a while ago, witnessing the game.
The support is pouring in, and why not? Credit to VCA. The level of cricket that we have in Vidarbha, there is no doubt about it. It's only going to get better and better as well, especially because you're producing amazing cricketers like Bharti Fulmali, who gets a call up to be at the highest level in the biggest of stages, the World Cup. If that's not motivation, then what would be for young girls to pick up the bat and ball in this part of the world? Chances down the track, takes that risky single, eventually will get it easily. Again, we spoke about how when the batter starts to use their feet, the bowler has to adjust their length. And Arya Gohane, she can get the ball to move around. Tinge of movement we have seen from her so far, and that's why on that occasion you saw Tanvi just using her feet and taking the single. And it sort of worked in Tanvi's favor as well, because she knew how hard she's hit it there. Because she knew that exactly, she'd already calculated that single in her mind, and that's credit to Tanvi. Disha accepted that call, and of course, Tanvi using her feet allowed her to cover a few yards, shaving off the 22 yards she had to cover. Once again, just trying to cut, just opening the face of the bat at the last moment. Disha Kasad loves to play that late cut, doesn't she, Disha? I still remember calling a game of Disha in Jamta last year, VPLW again. She was outstanding. I had a chance to speak to her at the post-match presentation after the win, and I asked her about the compositions of other side as well, how you prepare for a particular side. She said, I will not tell you how I prepare for them, but I can promise you I do prepare for them. The words I have for them is bring it on. Once again, played off the back foot. That came from the middle of the bat. But there is a fielder at cover. Now, what I like about Disha is the way she attacks the bowler. She doesn't really allow the bowler to dominate her. That's exactly the reason I told you that little story. She's not someone who goes into a shell. If you're presented with a challenge, you want to counter-attack, and Disha Kasat comes from that school of thought. An excellent player, without any doubt, Disha Kasat. An inspiration for a lot of young girls who want to take up cricket in Vidarbha. Now coming into this tournament, having scored a century in the Gazda T20 tournament as well. So riding on confidence. Was very close to the tram line, the delivery, but the umpire didn't think so. Arya Gohane just quickly running through the over. Only a single so far from the first 5 deliveries. How good has she been? We are talking about Nupur Kole has picked 2 wickets, but at the same time, Arya Gohane has made sure the pressure is sustained at the other end. This is a very important delivery in the context of the game. Should Captain Shraddha look for a spinner from the other end, then who will be on strike? Because Disha is yet to face even one ball of spin. Terrific from Disha. Will get that single, retain strike as well. For one moment I thought it's going for 4. Wasn't the case. Pressure still applied. Just 2 runs from that one. 5 gone, 18 for 2. Last over of the power play coming up. Interested in seeing who is Shraddha Nabira throwing the ball to. All right then, it's going to be Yashri Sole. For the first time, we're going to see pace from the church end in this innings. That will bring a new dynamic into this game. Captain Shraddha is very clear. Disha, you're not going to get spin. Shraddha is aware of the fact that Disha is actually a very good player of the spinners, so that's why probably she's not getting spin in action, as you mentioned. She's given her left arm orthodox now. She's given a left arm orthodox, correction. So what that does is, she's asking Kasat to go for the big shot because it's just 18 runs accumulated in the power play. And she's thrown the ball to one of the most
adventurous bowlers, because she's indeed tossing the ball up to Kasat. Asking Kasat to go for the big shots, just tempting her. Yashashree Sole bowling from the church end. Yes, she goes for the big shot, but she won't clear the circle. There we go. This is the wicket they wanted. Yashashree Sole gets the dangerous Disha Kasat. She was brought in for this very reason, to tempt Disha to go and clear the circle. She tried to do that, but fails to do so. And the captain walks back to the dugout. Clearly the power play is being won by the Master Blaster. And master of decision making, Shraddha Nabira, sticks to spin from the church, and we get to see pace from that end. Very different template from what the Tigers offered. And it seems to work wonders. Kasat's stay cut short by a well-planned delivery. And that's a very good catch. She never lost sight of the ball there. Excellent catch by Gargi. It's an uphill task from here. The Tigresses need to find a new hero. 18 for 3. Ria Bania, the new batter in the middle. She'll have a task cut out here. 3 wickets down in the power play, only a score of 18 on the board so far. It's just been NECO Master Blaster. It's been one of those nights, one of those run chases where you see the bowling side dominating completely. First from Nupur Kole, now Yashashree Sole. Kole and Sole doing the magic. Driven away straight away for a single. Yes, she'll get it. Had it been a direct throw, maybe it could have been interesting. In fact, a direct hit. Would have been a goner. That was timed really well, which means Ria had less time to get to the other end. This time towards that region between long on and deep mid wicket for a boundary. Finally breaking the shackles, coming out of the nutshell here. And it is Yashashree Sole who has been hit for a boundary after taking a crucial wicket of Disha Kasat. She got into the position quite early and she hit it in the gap. No man's land. Easy 4 runs for them. If you are in the Master Blasters dugout, you'll be a very happy man and woman here. Almost cuts it onto the stumps. Every time the batters in the Tigresses uniform, the Tigresses jersey, have gone on the back foot, they have not looked comfortable. 2 catches to the keeper already. This could have been chopped onto timber very easily. Lucky day for Tanvi. Because she's got a start, she should be the one guiding the Tigresses out of the difficult situation here. Last ball of the power play coming up. This over, despite a boundary, has still gone to plan for Yashashree Sole. She's picked up a wicket and a big one of Captain Kasat. Where is this one going to be? Slightly loopy outside off. She's gone towards the middle stump. Superbly stopped. Had it gone past her, was a certain boundary. Fielders complimenting their bowlers. It was Sania Chaurasia who made sure it did not run away for a boundary. At the end of the power play, the Tigresses are 24 for 3.
लगातार 2 मैचेस में टॉस हारा, लेकिन अपनी जीत की कैंपेन, अपनी कैंपेन की बेहद शानदार तरीके से इस मुकाबले को डोमिनेट किया है निको मास्टर ब्लास्टर्स ने। हालांकि लगातार दूसरी गेम में टॉस हारे हैं, लेकिन जीत की साथ अपने कैंपेन की जो शुरुआत सीजन 2 में यहां पर की है, डिफेंडिंग चैंपियंस को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। पावर प्ले बीत चुका है, 24 रन बोर्ड पर लगे हैं ऑरेंज टाइग्रेसेस के डिफेंडिंग चैंपियंस। और एक बार फिर जानवी टिचकुले पिछले कल भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी, और आज एक बार फिर और लेग साइड में, और क्लोज हो सकता था मामला यदि डायरेक्ट हिट होता, लेकिन अंत भला तो सब भला। डॉक्टर साहब, इस वक्त जिस मुकाम पर यह मुकाबला खड़ा है, 14 ओवर शेष है, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो किस तरह से निश्चित रूप से दबाव तो है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन के पास में जो दबाव होता है डिफेंडिंग चैंपियन पर, वो निश्चित रूप से है। निको मास्टर ब्लास्टर्स के लिए गंवाने लायक कुछ नहीं था, लेकिन जब चैंपियन टीम पहले मुकाबले में खेलती है तो एक पिछला जो दबाव होता है चैंपियन बनने का, वो दबाव से उनको खेलना होता है। लिहाजा ये जो शुरुआती झटके लगे कप्तान दिशा कासट के साथ में, वो यकीनी तौर पर उन्हें बैकफुट पर धकेलने के लिए पर्याप्त रही। जानवी जो कि कल भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी, स्नेहल मनियार के स्थान पर जानवी को मौका मिला है बतौर इम्पैक्ट खिलाड़ी। गुड लेग स्पॉट पर अपने आप को पोजीशन किया और खेला बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में। 1 रन लेने का अवसर जूझती हुई पिछली बार की चैंपियन ऑरेंज टाइग्रेसेस। 3 विकेट जो कि अग्रिम पंक्ति की 3 बैटर पवेलियन लौट चुकी है कप्तान दिशा कासस समेत, और महज 26 रन बने हैं। 7वां ओवर चल रहा है और जानवी की इस गेंद पर शॉट तो निश्चित रूप से बहुत बढ़िया था, लेकिन प्लेसमेंट नहीं था सीधे खेत रक्षक के पास में। और जैसे हम बताते रहे हैं कि विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन ने जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए परिश्रम लिए, इसकी ये मिसाल है कि बहुत चुस्त दुरुस्त क्षेत्र रक्षण हम यहाँ देख रहे हैं। और जानवी ऊंचे कद की दुबली पतली गेंदबाज, और इस बार लेकिन बल्ले का बाहरी हिस्सा लिया, और इसी के साथ में कोई अवसर नहीं था खेत रक्षक के लिए, और ये चौका, बहुप्रतीक्षित चौका 7वें ओवर में तन्वी के लिए। 20 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रही हैं रिया, जो कि नॉन स्ट्राइकर बैटर हैं। 3 गेंदों में 2 रन, और टॉस जीता पिछली बार की चैंपियन ऑरेंज टाइग्रेसेस ने, और पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। नतीजतन 150 रन बनाए थे निको मास्टर ब्लास्टर्स ने, और इसी प्रकार से ये लगातार दूसरा चौका। इस प्रकार के चौके विशाल टीम का जो शुरुआती संघर्ष है, जो दबाव है, उससे उबारने में निश्चित ही मददगार साबित होते हैं। और ये उसी प्रकार की गेंद थी, तेज गेंद थी, बल्लेबाज के लिए, बैटर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जो खाली स्पॉट था थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, केवल उसे अपने बल्ले का जो मुंह खोलते हुए खेलना था, और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर खेत रक्षक के लिए कोई अवसर नहीं। और जानवी जो कि इम्पैक्ट प्लेयर है, और कल के मुकाबले में उन्होंने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की थी। आज हालांकि पहले ओवर में निश्चित रूप से काफ़ी खर्चीली साबित हुई है। 7 ओवर निको मास्टर ब्लास्टर्स के खिलाफ ऑरेंज टाइग्रेसेस 34 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर दिशा का विकेट जो गिरा, वो बहुत बड़ा विकेट था डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए, और कहीं ना कहीं उसकी कीमत जरूर यहाँ पर चुकानी पड़ेगी। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद। अगर बात की जाए यहाँ पर इस वक्त निको मास्टर ब्लास्टर्स की, बेहद शानदार तरीके से इस गेम पर पूरा नियंत्रण यहाँ पर रखा है। 2 चौके जरूर आए थे,
दूसरा पहले का रिप्ले जरूर यहाँ पर देखने को मिला। थर्ड मैन थोड़ा सा वाइड खड़ा था और हल्का सा महीन सा किनारा बल्ले का गेंद लिया और सीमा रेखा के बाहर, कोई मौका वहां पर नहीं था। 2 चौकों से मनोबल जरूर यहाँ पर बढ़ेगा ऑरेंज टाइग्रेसेस का। एक बार फिर सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल स्ट्रेट शॉट, देखना ये होगा और कोई मौका वहां पर नहीं। हालांकि डाइव किया था फील्डर ने, लेकिन वो एरिया ऐसा होता है कि वहां पर गया शॉट और इस तरह की तेज आउटफील्ड डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल रहता है उसे डिफेंड कर पाना, रोक पाना। और गेंद भी बंदूक की गोली की तरह निकली। कोई खास प्रयास करने के बावजूद सफलता मिलने की गुंजाइश काफ़ी कम होती है। अपना बल्ले का मुंह खोलते हुए बाहों का इस्तेमाल किया और क्षेत्ररक्षक के लिए हालांकि गोता जरूर लगाया, लेकिन काफ़ी देर से वो पहुंची थी क्षेत्ररक्षक। नतीजतन 38 ऑरेंज टाइग्रेसेस पिछली बार की चैंपियन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 8वें ओवर में यशस्वी सोले दूसरा ओवर, नपीतुली किफ़ायती गेंदबाजी की पिछले ओवर में। हालांकि इस ओवर में निश्चित ही एक चौका गया है। पहले ओवर में 1 विकेट अर्जित किया था और 6 रन उन्होंने पहले ओवर में खर्च किए थे। अब तक कुल 10 रन खर्च कर चुकी है और बेशकीमती विकेट हासिल किया है। अपने ही फॉलो थ्रू में यहाँ पर गेंद को पकड़ेंगे यशस्वी और निश्चित रूप से यहाँ पर सही कहा था डॉक्टर यश ने, सोले एंड कोले हैविंग द मैजिक इन द मैच। और बहुत शानदार तरीके से नूपुर और यशस्वी यहाँ पर जो इस मैच में निको मास्टर्स के लिए एक नई जीत की इबारत यहाँ पर लिखते हुए हल्के हाथ से खेला, स्क्वायर की दिशा में एक रन जरूर यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से जब तक गेंद पहुंचती नॉन स्ट्राइकर एंड पर। वह शानदार तरीके से यहाँ पर 7.3 ओवर्स का खेल यहाँ पर हो चुका है। 39 यहाँ पर जो यशस्वी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था कप्तान दिशा कासट के रूप में, और इस प्रकार से ये स्विफ्ट खेला है लॉन्ग लेग बाउंड्री के तरफ। कोई क्षेत्ररक्षक नहीं था, काफी लंबी दौड़ लगानी थी स्क्वायर लेग के क्षेत्ररक्षक के लिए। फलस्वरूप ये एक और चौका। शुरुआती झटकों से उबारने का प्रयास वर्तमान इस जोड़ी का, देखिए किस प्रकार से प्रयास जरूर किया था लेकिन काफी दूर रह गई थी क्षेत्ररक्षक। तन्वी 22 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रही हैं। डॉक्टर साहब पिछले कुछ ओवर्स में यहाँ पर जरूर वापसी करने का प्रयास किया है ऑरेंज टाइग्रेसेस ने। अगर बात करें पावर प्ले बेहद साधारण बीता था, 24 रन बोर्ड पर लगे थे, लेकिन उसके बाद 2 ओवर्स में अभी तक यहाँ पर 19 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। और यहाँ से प्रयास यहाँ पर वो रहेगा जो मोमेंटम खोया था, जिस तरह से एनएमबीज एकदम से हावी होने का प्रयास कर रहे थे, उस चक्रव्यूह को तोड़ा जाए और वापसी इस मैच में की जाए। डिफेंडिंग चैंपियन से तो निश्चित रूप से एक चैंपियन खेल यहाँ पर जरूर दिखाना पड़ेगा। श्रेया लांजेवार परिवर्तन के तौर पर पवेलियन छोर से अपना पहला ओवर 43 3 विकेट के नुकसान पर। ऑरेंज टाइग्रेसेस 3 विकेट गंवाने के बाद निश्चित ही एक दबाव है, लेकिन रिया और तन्वी प्रयास करते हुए टीम को इस संकट की स्थिति से उबारने का। तन्वी ने 22 गेंदों में 25 रन बनाए, जबकि रिया 10 गेंदों पे 8 रन जोड़कर पूरा साथ दे रही है अपनी साथी बैटर तन्वी का। विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन की ये विदर्भा विमेंस प्रीमियर लीग का दूसरा दिन, 4 टीमें इसमें शिरकत कर रही हैं राउंड रॉबिन लीग आधार पर मुकाबले। इस बार स्वीप किया और ये बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण, गोता लगा के गेंद को रोका। नतीजतन फिलहाल 2 रन जोड़कर दौड़कर बनाने का मौका। 46 9वें ओवर में 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद
ऑरेंज टाइग्रेसेस जो कि पिछली बार की चैंपियन अपने पहले मुकाबले में नीको मास्टर ब्लास्टर के खिलाफ थोड़ी संघर्षरत। श्रेया की इस गेंद पर एक हल्का सा हवा में लहराता हुआ शॉट, इरादा केवल 1 रन बनाने का। 47 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद श्रेया के सामने रिया अब 10 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रही हैं। तारीफ श्रद्धा नवीरा की भी करनी होगी। महज अभी 9वां ओवर है और 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी हैं। बोल्ड, बहुत बड़ा झटका यहां पर रखते हुए रिया को वापस जाना होगा। श्रेया लांजेवार पहले ही ओवर में आकर अपना काम कर चुकी हैं। जिस काम के लिए उन्हें लाया गया था उस काम को अंजाम देते हुए चौथा झटका ऑरेंज टाइग्रेसेस को यहां पर लगते हुए बड़ा विकेट यहां पर गिरा है और कहीं ना कहीं अब दबाव और यहां पर बढ़ने वाला। निको के खेमे में, निको के समर्थकों में, निको मास्टर ब्लास्टर्स के समर्थकों में खुशी की लहर। फ्लाइट टप्पा खाने के बाद में गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर थी। गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं, बैट और पैड के बीच से गेंद निकली और इस प्रकार से ये चौथा विकेट। ऑरेंज टाइग्रेसेस पिछली बार की चैंपियन, निश्चित ही इस बार खिताब की रक्षा करनी है तो पहले मुकाबले से जीत का अभियान बरकरार रखने का प्रयास, लेकिन फिलहाल संघर्ष करते हुए 4 अग्रिम पंक्ति की योद्धा, 4 अग्रिम पंक्ति की बैटर, अनुभवी दिशा कासट जो कि टीम के कप्तान हैं, उनके समेत 4 खिलाड़ी, 4 बैटर पवेलियन लौट चुकी है और महक अब नई बैटर के रूप में तन्वी का साथ देने के लिए। विशाल, तन्वी की बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी। 24 गेंदों में 28 रन और अपना विकेट सुरक्षित रखते हुए, हालांकि लक्ष्य जो है वो 151 रन का है, लिहाजा यहाँ स्कोरबोर्ड को चलायमान भी रखना है, अपने विकेट को सुरक्षित रखना है और महक और तन्वी की जोड़ी पर यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तन्वी एक छोर से खूंटा गाड़ कर बैठी हैं और बेहद शानदार तरीके से बैटिंग की। महक मिस्त्री इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर आ चुकी हैं और फ्लाइट डिलीवरी। श्रेया का पहला ओवर 4 रन जरूर दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट यहां पर निकाला और 9 ओवर्स का खेल खत्म होने तक 47 रन ऑरेंज टाइग्रेसेस 4 विकेट के नुकसान पर रहा। दर्शकों को मैं बता दूं कि आप ये लाइव कवरेज, ये सीधा प्रसारण थर्ड आई टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के इस ऐतिहासिक और खूबसूरत स्टेडियम में विमेन्स विदर्भा प्रीमियर लीग का यह महत्वपूर्ण और दूसरा मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस ऑरेंज टाइग्रेसेस और इसके साथ साथ निको मास्टर ब्लास्टर्स के बीच चलते हुए। स्पिन गेंदबाजों का जलवा, सभी 4 सफलताएं जो है स्पिन गेंदबाजों के नाम। इसी मैदान पर मनिंदर सिंह इसी विकेट पर अपना करिश्मा कर चुके थे श्रीलंका के खिलाफ, और इस बीच ये ऑन साइड पर हल्का सा ड्राइव, 1 रन बनाने का अवसर। स्कोर 9 ओवर के समाप्ति के बाद में 48 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद जानवी टिचकुले जो कि इम्पैक्ट गेंदबाज, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में और अब बैटर के रूप में भी प्रतिद्वंदी ऑरेंज टाइग्रेसेस के लिए महक मिस्त्री जो कि इम्पैक्ट बैटर के तौर पर मैदान पर मौजूद। दोनों इम्पैक्ट खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला और ये उठाकर खेला है और इस बार निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया शॉट। और इस प्रकार के खुल के शॉट खेलने से विशाल एक फायदा होता है, एक दबाव से उबरने का भी प्रयास होता है और टीम के खाते में 4 रन जुड़ते हैं। बहुत ही अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल, बैक टू बॉलर, बिल्कुल बॉलर के ऊपर से, और कोई अवसर नहीं मिला और उस चौके की मदद से अर्धशतक पूरा हुआ। ऑरेंज टाइग्रेसेस हालांकि 4 विकेट, 4 महत्वपूर्ण बैटर पवेलियन लौट चुकी है, जिसमें कप्तान दिशा कासट का विकेट भी शामिल है। जानवी अब तक 14 रन खर्च किए हैं, दूसरा ओवर
सफलता नहीं, चारों सफलताएं स्पिन गेंदबाजों को। बहुत ही सटी हुई गेंदबाजी, गेंद बल्ले के ऊपर से निकली। भाग्यशाली तो कहा जाएगा, विकेटकीपर के लिए पूरा अवसर था, लेकिन नुकसान वाली कोई बात नहीं। वो धीमी गेंद रही और निश्चित रूप से सही कहा आपने, भाग्यशाली की बाहरी किनारा वहां पर नहीं लगा। अच्छा कमबैक करती हुई यहाँ पर जानवी टिचकुले एक बाउंड्री यहाँ पर जरूर हासिल की थी। महक मिस्त्री ने चाका लगाकर खाता यहाँ पर खोला अपना। और एक बार फिर दोनों ही इंपैक्ट प्लेयर्स के बीच का ये बैटल बेहद इंटरेस्टिंग यहाँ पर रहने वाला है। बहुत ही शानदार उठाकर खेला, इनसाइड आउट शॉट, 4 रन। बेहद खूबसूरत ये शॉट रहा, बल्ले का फुल फेस खोलते हुए इनसाइड आउट खेला और 4 रन कवर्स के ऊपर से, कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बिल्कुल बीच, माफ कीजिएगा, कवर्स और मिड ऑफ के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर ये 4 रन आते हुए और इसके साथ ही स्कोर 56, 56 रन यहाँ पर लग चुके हैं बोर्ड पर। बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रनों की मदद से 10वें ओवर में ऑरेंज टाइग्रेसेस 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन। महक 8 रन बनाकर, तन्वी एक जिम्मेवार बैटर के रूप में 25 गेंदों में 29 रन बनाने में सफल। और ये शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन सीधे खेत रक्षक के लिए। 150 रन नीको मास्टर ब्लास्टर्स ने टॉस हारने के बाद बनाए थे और उनकी गेंदबाजों ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। खास करके पहले मुकाबले में जीत की जो शिल्पकार रही, जीत की जो हीरो रही, नुपुर ने आज भी अपना कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट हासिल किए हैं, 2 विकेट अर्जित किए हैं। और तन्वी मिस्त्री जो कि जिम्मेवारी के साथ में खेल रही है, 25 गेंदों में 29 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और इस बार महक ने खेल दिया है और इसी के साथ ये 4 रन। जानवी टिचकुले को पूरे तरीके से उन्होंने यहाँ पर निशाने पर लिया और उनके इस ओवर से 13 महत्वपूर्ण रन्स हासिल करने में कामयाब रही हैं महक मिस्त्री। इंपैक्ट वर्सेस इंपैक्ट के अभी तक की ये जो बैटल इस ओवर में चल रही थी, इसमें निश्चित रूप से महक मिस्त्री आगे निकल चुकी हैं जानवी टिचकुले से। 13 रन्स हासिल किए, उसके साथ 10 ओवर्स में 60 रन्स का स्कोर। अब डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि आस्किंग रेट 9 रन्स प्रति ओवर से ऊपर, यानी कि यहां से 60 गेंद में 90 रन बनाने होंगे ऑरेंज टाइग्रेसेस को। मुश्किल लक्ष्य नहीं है, असंभव लक्ष्य नहीं है, हालांकि मुश्किल अवश्य यहां पर होगा, लेकिन विकेट्स कहीं ना कहीं यहां पर इस वक्त महत्वपूर्ण, अगर विकेट्स हाथ में होते। विशाल, बिल्कुल सही बात कही आपने कि विकेट भी सुरक्षित रखना है और 9 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं। एक दबाव तो है, लेकिन जैसे हम साहसी खिलाड़ी जो होते हैं उन्हें भाग्य का भी साथ मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो मुकाबला होगा वो मुकाबले में आखिर गेंद तक संघर्ष देखने के लिए मिलेगा। श्रेया लांजेवार स्पिन गेंदबाज ऑफ स्टंप के बाहर थी। गेंद को महक ने खेलने का प्रयास किया, हालांकि आधे अधूरे प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच में किसी प्रकार का संपर्क नहीं। ऑरेंज टाइग्रेसेस, श्रेया इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ, सुरक्षात्मक अंदाज में। हालांकि एक डॉट बॉल जाना जो निश्चित रूप से आस्किंग रन रेट जो है वो बढ़ेगा, उससे दबाव भी पड़ेगा, लेकिन अपने विकेट भी सुरक्षित रखने हैं। महक और तन्वी की जोड़ी पर सारा दारोमदार। महक 8 गेंदों में 12 रन बनाकर इस बार हवा में खेला और इस बार बहुत ही शानदार चौका, बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के नीचे अपनी बाहें खोली, मौका ताड़ा और ये एक अच्छा शानदार शॉट। डॉक्टर साहब इसे कहेंगे कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, प्रयास कर रही थी कट करने का। वो जो गैप वहां पर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच दिखाई दे रहा था, 2 बार उसे टपाने का प्रयास किया, कामयाब नहीं रही, तो सीधे बल्ले से बिल्कुल गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका बटोरने में कामयाब रही है महक मिस्त्री। 9 गेंदों पे 16 रन के निजी स्कोर पर जा पहुंची हैं।
बिजी प्लेयर आते ही यहाँ पर अपना काम बखूबी कर रही हैं। जानते हैं कि इस वक्त टीम को तेज गति से रन्स बनाने की जरूरत है और उसी के मुताबिक यहाँ पर इस गेम को चलाते हुए महक मिस्त्री और तन्वी शानदार तरीके से महत्वपूर्ण रनों का यहाँ पर योगदान देते हुए 26 गेंद में 30 रन और बड़े हल्के हाथ से इसको लेट कट किया, डायरेक्ट हिट। देखना होगा कि क्या थर्ड अंपायर इसमें इंटरेस्टेड हैं। शायद रन पूरा कर चुकी हैं और गेंदबाजी खेमे में भी कोई ज्यादा उत्साह वहां पर नहीं इस अपील को लेकर। ऑरेंज टाइग्रेसेस पिछली बार की चैंपियन यानी कि गत चैंपियन होने का एक रुतबा भी होता है, लेकिन एक दबाव भी होता है टीम पर, और शायद उस दबाव के चलते ही इस मुकाबले में फिलहाल संघर्ष की स्थिति में ऑरेंज टाइग्रेसेस, जिसके कि 4 अग्रिम पंक्ति की बल्लेबाज बैटर पवेलियन में लौट चुकी है। 11वें ओवर की समाप्ति में महज 1 गेंद बाकी है। 66 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद लेग स्पिनर श्रेया लांजेवार और इस बार खेला ऑफ साइड में। हालांकि लेग स्पिनर के लिए ये खतरा होता है, काफ़ी महंगे साबित होते हैं लेग स्पिनर, लेकिन नबीरा ने अपनी गेंदबाजों का बखूबी इस्तेमाल किया है और अब तक 4 सफलताएं जो है वो स्पिन गेंदबाजों को मिलती रही है। इससे ये साबित है कि विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के इस ऐतिहासिक विकेट की ये खूबसूरती है, ये खूबी है कि यहाँ स्पिनर्स हमेशा राज करते रहे हैं। चाहे इतिहास की हम बात करें, मनिंदर सिंह जैसे गेंदबाजों ने यहाँ कमाल का प्रदर्शन किया है और भारतीय टीम को जीत दिलाने में, सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और इस प्रकार से अब 12वें ओवर की तैयारी में कमेंट्री बॉक्स में भी तब्दीली। We will see Gargi Banote for the first time in the attack. 67 for 4, the Tigresses. 84 is what they need from 54 deliveries. Not impossible, but they need to make sure that Tanvi and Mehak stay there till at least the 18th or 19th over. Oh, that paddle scope straight to the fielder. She's dropped it. She's dropped it. For a moment, it felt as if the 5th wicket was coming. Not to be the case eventually. It runs away towards the fence. Could have been catching practice. Yeah, was on the move. Wasn't settled, Nupur. And after it beat her, no chance. I hope she's all right because the ball hit her face as well. Yeah, this is where she should have taken it. And to add insult to injury, yes, she also got one right on the chin. Hope she's all right. There was a reverse scoop from Tanvi Mende. Exactly. A shot that Jitesh Sharma tried today and got out. That was for Master Blaster main. Well, NECO Master Blaster men, they won't be a happy side at this point, having lost all of their games. They would love to draw inspiration from their women's side, for sure. Such a good side. Defending champions not opening the account just tells you that the level of competition is forever rising in Vidarbha, and that's a beautiful sign for cricket itself in this part of the world. And also tells you that cricket is a great leveler. You might be a champion, you might score a century on the previous day, but you got to start once again in the next match. You start from zero, you start afresh. At this point, of course, this over, 5 runs from the first 3 deliveries. They would want to convert this into a big one. At least 10 runs from this over to make sure they stay in touch with the required run rate. Right in the block hole, but equally well played by Mehak. Just opening the face of the bat. Did not get any run, but it was dug out well by Mehak. $79 more required. The required rate's 9.48. Current rate's a humble 6.1. Someone has to up the ante and they can't leave it too late.
Because once the required rate runs over 10.5, 11, gets difficult to chase that down regularly for the next 7-8 overs. Once again, Gargi watching the batter till the last moment. Despite her walking down the track, not stepping out much, walking down the track, couldn't get underneath the ball. Reminds me of Robin Uthappa, the walking assassin. He was a part of the VPL last season. Tucked away for a single. Singles won't hurt the Master Blasters at all. 6 runs of the in fact 6 runs of this over after 12. Master Blasters make sure they keep Tigresses to 74 for 4. Good to see crowd coming out in numbers at the VCA Civil Lines to witness this game. They're enjoying the action. Doesn't really matter which side wins. At the end of the day, it is cricket who'll win. And Yashasvi Sole is back in the attack. Using her feet, Tanvi Mende takes the single, moves to 38. Just have a look at those dance moves. Tigresses are the ones celebrating more because they believe they can claw themselves back into this game. What a wonderful delivery from Yashasvi. Oh yes, we have a Mehak fan, a Tanvi fan, a Disha fan and a John Cena fan. You've got to admire this diverse crowd that has turned up for the Tigresses. They're enjoying themselves. That's good to see. Always fascinating to see people, showing the dance moves. They're enjoying the action. As you mentioned, they believe their side can still chase it down, and they actually can, because we saw the game turning the tide yesterday as well. At one point, strikers were ahead in the run chase, but then Master Blasters came back really well. Once again, trying to use the feet, but no room on offer. Will only get a single. So I was talking about yesterday's game. At one stage, it felt as if strikers will win the game easily, but it was in the 17th over when they lost the wicket of Diya, followed by Sanskruti, which turned the game completely in the favor of the Master Blasters. As of tonight, it can be this particular partnership, which has already moved on to 31 of 24 deliveries, which can turn the tide in the favor of the Tigresses. And hopefully, they play by their name, play like Tigers, Tigresses rather. Attack is the only option then. She had picked her spot. That's gone through. Could have been a better effort on the field. But Tanvi's got what exactly she was looking for. Ends the over with a boundary. Gets some momentum going. 82 for 4. All 3 stumps visible. That boundary adds up more fire to the celebration of the Tigresses. They're enjoying the band which is out here at the Civil Lines Stadium in Nagpur, the center of the city. So a lot of fans can actually come by and witness the action as compared to the Jamta Stadium, which is away from the city center. Here's Yashasvi Sole bowling her final over. She's given away 23, picked a wicket. Holds it right in the block hole as Tanvi hits it to long off for a single. Lots of experience here for Gargi. 36 wickets.
Nicely done. Good fielding as well. Good cricket all around. 2 runs taken meanwhile. She wasn't very comfortable. That's because the pad had turned. The decibel levels are going up at the Civil Line Stadium in Nagpur. And for all those who are tuned in, watching us live on YouTube, you must thank Third Eye TV for bringing this action closer to you. Yes, they've done a phenomenal job, an Indian company. And it's growing rapidly. Got into a good position to play that shot, but that area is plugged. Gargi Banot bowling according to her field. Good to see Captain Shraddha actually supporting Gargi Banot there and offering the option to set her own field. Singles and twos will not cut the mustard at this stage. The boundary ball has to come by, and if it happens earlier in the over, even better for the Tigresses. The required rate is touch 10. Hopefully it doesn't go above 10. That is what the Tigresses will be aiming at. Till 10, it is still under control in my opinion. In modern day cricket, you back yourselves to chase this down, but of course they'll need wickets in hand to do that. At this point, this particular partnership is actually going really well, but they slightly need to up the ante here. They need those boundaries. At least one boundary in an over is what the Tigresses need desperately. Cheeky, tried to be cheeky, Tanvi. Not to any benefit. After 14, the Tigresses are 87 for 4. Yashashree Sole greeted with a shot where you just cannot place a fielder even if you want to. What a shot it was. Down the ground, struck with power, struck with authority from Mehak. Greeting Yashashree Sole, as you mentioned, Suhas. Saying her, all right, you might have picked a wicket so far, but here I am, ready for the challenge. Underneath a bat, and it goes down the ground for a boundary. They'll need a few more like these. Perfect start to the over as far as the Tigresses are concerned. This needs to be the big over that turns the momentum around. So close to the stump. Yeah, have a look at that ball. Might have a green paint coat. So close, yet so far. Yashashree Sole. What a peach of a delivery that was. Just the kind of delivery you want to bowl as a bowler after getting struck for a boundary down the ground. Once again in the block hole. Tight single. She will sneak it through. She had to cover an extra bit of distance because the bowler was in her way. It is not Yashashree Sole's problem. She was backing up, just completing her follow through. Mehak could have been the one in trouble because she had to go around Yashashree.
Kept it on that 6-stump line, away from the hitting arc of Tanvi Mende, who's 4 runs short of what will be the maiden half century of this tournament. Just out of courtesy. Come on, keeper. You could have helped with the furniture being reset. Just out of courtesy. She went back to her position very quickly. Five runs of the over so far. That angle seems to work for Yashasri now. That angle to the right-handers. We were talking about the required run rate. It is now hovering close to 12 runs per over. You're asking for trouble. You're asking for trouble, Tigresses. You need a 6 of this ball. Come on. Come on, Tanvi. Get a 6 and get your half century as well. Dances down the track and the keeper misses an opportunity too. There was definitely an opportunity to stump the batter. At the end of 15, Tigresses are 92 for 4. There we go, an opportunity missed by the wicketkeeper. Yeah. Still could have been in trouble. There was another opportunity as well. 92 for 4. They got to get a move on here, the Tigresses. Just cannot continue to nurdle the ball around and find an odd boundary. That's not the equation here. Coming back from the timeout, I'm very sure the Tigresses receive more messages than bottles of water. Gargi Banote from the church end. For a third over. Here we go. Once again using her feet. Oh, there can be a run out at the non-strikers end. Eventually not to be the case. Need to be careful here. You can see, you can sense some urgency now. Quite understandably as well. Dot ball's not a good result for the Tigresses, and hence she was trying to sneak a single. Good thinking by the vice captain to have not thrown there because the backup hadn't arrived. An appeal which I don't think really had anything in it. Again, bowling to the 6-7 stump line, asking the batter to reach closer to the ball and play it over that cover, extra cover region. One of the toughest shots to play against a fast bowler. A risky delivery as well, but third inside the circle. Just get a feeling if there's any bat to it, would have... Well, what about this one? Catching practice. Captain Shraddha doesn't put that one down. She never will. Couple of dot balls and a wicket follows. Something had to give, and this is a huge blow. It's the captain Nabira who doesn't commit any mistake. And the celebration following that catch tells you that the Master Blasters now believe they have almost stamped their authority on this game. Dancing down the track, trying to clear the field at long off. Not to be the case. Shraddha Nabira, number 18, with her arms wide open, celebration. As Master Blasters strike once again. The Tigresses, half of their team is back in the dugout now. Very good catch in the end. Very comfortable underneath this one. Elated skipper. The Tigresses are still celebrating. The horns are getting bigger.
They are looking at the game. Yes, they're here to celebrate cricket, not just their side. So the scorecard is not something that's going to dampen the spirit. No, not at all. Also, probably they're aware of the fact that the camera person is focusing on them and they are live on YouTube. So they're enjoying the action, but that's always good to see. Doesn't really matter. At the end, it's about enjoying the game. That's why you are here. That's why you actually started playing cricket as well as a player. Results are a part and parcel of the game. But if you keep on enjoying the game, results will automatically come by. Swing and a miss. Be prepared to see more of these two now. Janvi Ranganathan, first ball, wanted to smack it on the leg side. There is a deep mid wicket lurking. Remember, it had to be very well timed to clear her. The catching has been phenomenal today from NMB. Deep mid wicket. Long on, long off. They've got the field set for that big shot. Once again in the block hole. Excellent from Gargi. Not giving any chance to the batter whatsoever to free her arms. Never has she bowled to the batter's strengths. Excellent stuff. With every passing delivery, the game is drifting away from the Tigresses here. They're the defending champions, mind you, up against Master Blasters. What a shot. This one, as we talk about it, she gets a half century. Tanvi Mende. With that boundary, she becomes the first half centurion of the VPLW. Season 2. Yeah, she had picked her spot already. And the fact that it was a full toss helped her as well. Take nothing away from this innings. She had to mend the innings when wickets were falling at regular intervals after the captain's departure, especially within the power play. She has held this innings together but needs to have that crescendo finish towards the end and curb that 13.5 required rate if they want to be on the right side of the result at the end of this game, the Tigresses. 97 for 5 after 16. चौबीस गेंदों में 54 रनों का लक्ष्य आर्या गोहा ने। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी, हालांकि विकेट नहीं लेकिन किफायती केवल 12 रन खर्च किए। 24 गेंदों में 54 रनों का लक्ष्य। 97 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद ऑरेंज टाइग्रेसेस गत चैंपियन जानवी और तन्वी की जोड़ी मौजूदा प्रीमियर लीग में, इस महिलाओं की विमेंस प्रीमियर लीग में तन्वी का ये पहला अर्धशतक, मतलब पूरी टूर्नामेंट में ये पहला अर्धशतक जड़ने वाली खिलाड़ी। तो यहाँ से अब जो इक्वेशन है, और बहुत क्लोज हो सकता था, बहुत ज्यादा दूर था वो थ्रो। अगर ये थ्रो थोड़ा सा भी स्टंप्स के पास होता तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मौका बन सकता था एक और विकेट का। तो कुल मिलाकर अब जो इक्वेशन यहाँ पर है, 23 गेंदों में 53 रन यहाँ पर बनाने होंगे। और इस वक्त पूरी तरह से निको मास्टर ब्लास्टर्स चढ़कर खेलते हुए और डिफेंडिंग चैंपियंस को, और ये बिल्कुल सीधे बल्ले से उठाकर खेला है और ये कैच। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थी और एक बार फिर यहां पर बड़ा झटका यहां पर। जानवी अभी अभी आई थी और एकदम से यहां पर जो वो लॉन्ग ऑफ पर पकड़ी गई। हालांकि प्रयास उनका यही था, उठाकर खेला था। अब जो यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पर हैं वो हवा में ही खेलना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब 52 रन चाहिए, 22 गेंदें यहाँ से बचती हैं, तो जो रन रेट है वो अब 14 के आसपास जा पहुंचा है। अब हमें वैभव सूर्यवंशी की याद आ रही है। अब यहाँ यदि मुकाबले का रुख बदलना है, नक्शा बदलना है,
दर्शकों की तादाद इस रोमांचक मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन सिविल लाइंस के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में 6 खिलाड़ी वेदांती सलोटकर जो कि नई बल्लेबाज, नई बैटर वेदांती तन्वी के साथ में 42 गेंदों में 50 रन अपना 50वां पूरा करने में सफल रही है। और आर्या जो कि एक बेशकीमती विकेट जो कि 3.2 ओवर की गेंदबाजी 14 रन महज खर्च किए और निको मास्टर ब्लास्टर्स एनएमवी के लिए सदी भी गेंदबाजी करने का गौरव। और ये गेंद और इसी के साथ में फिर एक और झटका, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और इसी के साथ में ये 7वां विकेट गिरा है, जबकि वेदांती अपना खाता मतलब पहली ही गेंद पर आउट हुई। गोल्डन डक इस प्रकार से ये 6 विकेट 100 के लिए संघर्ष करती हुई टीम 99 पर अटकी हुई। देखिए किस प्रकार से गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के लिए एक निहारिका के लिए कोई खास परेशानी नहीं। और देखते ही देखते 7 खिलाड़ी 7 बैटर पवेलियन लौट चुकी है। 14.86 के औसत से रन बनाने हैं 21 गेंदों में 52। तृप्ति लोढ़े नई बैटर पहुंच चुकी हैं मैदान पर तन्वी का साथ देने के लिए। एक छोर से तन्वी अर्धशतकीय पारी तारीफ करनी होगी, इन मुश्किल परिस्थितियों में भी यहाँ पर खड़ी रही और टीम को जिताने का हैट्रिक चांस यहाँ पर। ओ सटीक यार्कर, थोड़ा सा अगर लाइन में गेंद रहता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुश्किलात में पड़ सकती थी। जल्दी से जल्दी अपने रन की तरफ दौड़ती हुई आर्या गोहाने, 2 गेंद शेष है उनके इस ओवर की, 99 रन बोर्ड पर लगे हैं, 7 विकेट्स डाउन हो चुके हैं। 17वें ओवर की 2 गेंद, इसके बाद 20 गेंदों का खेल बाकी, 52 रन और आस्किंग रेट अब 15 रन प्रति ओवर से ऊपर जा चुका है। डॉक्टर साहब इस बार फुल टॉस, हालांकि खेलने का प्रयास पहले आप के चक्कर में, हालांकि आखिर में रन न लेना ही मुनासिब समझा। आर्या गोहाने जो कि इकलौती मीडियम पेसर है जिन्होंने कि 2 विकेट हासिल किए हैं। शेष सफलताओं में स्पिनर्स का योगदान अहम रहा है। तृप्ति 0 फिलहाल 2 गेंदें खेलने के बाद। तन्वी 42 गेंदों में 50 रन, काफ़ी देर से अटकी हुई। 151 का लक्ष्य 99 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। ऑरेंज टाइग्रेसेस पिछली बार की चैंपियन और एक राहत भरा चौका। हालांकि मुश्किल लक्ष्य क्रिकेट में कोई असंभव नहीं होता, हालांकि उसके लिए यकीनन वैभव सूर्यवंशी जैसे धाकड़ बल्लेबाज की जरूरत होगी। ओवर पिच बनाकर कोई खास ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा और इसी के साथ में ये राहत भरा चौका। हालांकि जिस प्रकार से रन बनाने की ज़रूरत है वो अब काफ़ी मुश्किल है, असंभव नहीं। और अब नुपुर को मोर्चे पर लगाया गया है। कल की जीत में नुपुर कोहले ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और मुकाबले का नक्शा बदल दिया था उनकी गेंदबाजी में। देखना है, हालांकि अब बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है निको मास्टर ब्लास्टर्स के लिए, लेकिन फिर भी बैट है बैटर के पास में और मुकाबले का नक्शा बदलने की क्षमता तन्वी जैसी तजुर्बेकार बल्लेबाज 42 गेंदों में 50 रन बनाने में सफल। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस वक्त नूपुर कोहले के 2 ओवर्स पर विशेष रूप से नजर। पहले 2 ओवर्स जो उन्होंने डाले थे, महज 6 रन खर्च किए, 2 बहुमूल्य विकेट्स निकाले थे और पिछले कल भी कुछ इसी तरह से डेप्थ ओवर्स में यहाँ पर आई थी और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हुए पगारिया स्ट्राइकर्स को एक के बाद एक ब्लोज दिए और मैच को निकाल कर वहां से ले गई थी। हालांकि बेहद क्लोज कॉन्टेस्ट वो यहाँ पर रहा था और आज
बहुत मौका यहाँ पर, और इसी बीच शानदार 4 रन पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बिल्कुल बीच में से जो एक महीन सी दरार यहाँ पर मिली, उसमें से धकेलते हुए चौका बटोरा यहाँ पर तृप्ति के 4 गेंदों में 8 रन, और ये दूसरा चौका उनके बल्ले से निकला है। हालांकि अब यहां से अगर बात की जाए तो बॉल 16 गेंद का यहां पर जो खेल शेष है, 43 रन अभी भी यहां पर जीत के लिए चाहिए। तो कितना मुश्किल कितना आसान, हालांकि नंबर 9 की बैटर उतर आई हैं और इस वक्त कंडीशंस जो है यहाँ पर काफी हद तक इस मैच का झुकाव निको मास्टर ब्लास्टर्स की तरफ जाते हुए दिख रहा है। नूपुर, और इस बार स्विप बहुत ही खूबसूरत, 4 रन। ये देखिए जश्न ऑरेंज टाइग्रेसेस के समर्थक जश्न मनाते हुए। हालांकि मुकाबले की हार जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जश्न मनाना। क्रिकेट और खास करके लीग्स में इस प्रकार का त्यौहार का मौसम, त्यौहार का माहौल हम देखते रहे हैं। 112 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद ऑरेंज टाइग्रेसेस गत चैंपियन 15 गेंदों में 39 रन विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के सिविल लाइन स्थित स्टेडियम में थर्ड आई के माध्यम से आप इस मुकाबले का सजीव प्रसारण देख रहे हैं। इस बीच गेंद को जमीन के सहारे खेला और ये रन आउट। यह हालांकि आत्मघाती फैसला था। पहला रन निश्चित रूप से आसानी के साथ हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन देखिए किस प्रकार से नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन को पहुंचने में 2-4 किलोमीटर का फासला हो सकता है। काफी दूर आपसी तालमेल और समझबूझ निको मास्टर ब्लास्टर्स की खेमे में खुशी का इजहार उनके समर्थक अपने झंडे को फहराते हुए, और इसी के साथ में ये एक विकेट, लगभग मुकाबले का फैसला हो चुका है। नॉन स्ट्राइकर पर विकेट गिरा है तो अर्धशतकीय पारी खेलने वाली तन्वी वहां पर थी। जी बिल्कुल, तन्वी का विकेट गिरा है और ये बड़ा झटका है इस वक्त। 51 रन की पारी खेलने के बाद यहाँ पर अब कोमल झांझड़ बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर उतर आई हैं। नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने के लिए कोमल। बहुत ज्यादा बाहर था गेंद, हालांकि अंपायर ने बिल्कुल भी उसको जो है वो यहाँ पर और फिर से बाहर कोण का इस्तेमाल कर रही है नूपुर, और जिस तरह से इस ओवर को यहाँ पर चलाया, 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पर 113 रन 8 विकेट के नुकसान पर कोमल और तृप्ति इस वक्त जो है वो फील्ड पर है। कोमल झांझड़ जो कि शानदार गेंदबाज हैं, आरसीबी के लिए यहाँ पर जो वो अपना जलवा दिखा चुकी हैं WPL में, और इस वक्त विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन की विमेन्स विदर्भा प्रीमियर लीग का सीजन 2 का यह दूसरा ही मुकाबला निको मास्टर ब्लास्टर्स और ऑरेंज टाइग्रेसेस के बीच। और इस वक्त एनएमबी बहुत हद तक हावी हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, अब औपचारिकता शेष, ये कहना गलत नहीं होगा? महज औपचारिकता, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आठ विकेट के नुकसान पर 113 ऑरेंज टाइग्रेसेस के लिए लगभग मुश्किल लक्ष्य। श्रेया लांजेवार स्पिन गेंदबाज, लेग स्पिन मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ जाती भी गेंद को खेल भर दिया, लेकिन 1 रन पर संतोष। 114 8 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद
19वां ओवर, मतलब 8 गेंदें बाकी है। और ये डॉट बॉल, कुल मिलाकर 9 गेंदें बाकी है और श्रेया लांजेवार अब तक 3 गेंदों में केवल 2 रन खर्च किए हैं। इस बार हवा में उठाकर खेला है और एक मुश्किल कैच को बड़े ही आसानी से लपक लिया और इसी के साथ में ये 9वीं सफलता, 9वां विकेट गिरा है श्रेया लांजेवार के खाते में। ये सफलता जो कि कोमल झंझाड़ जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज, आगे आकर शॉट खेलने का प्रयास, क्षेत्ररक्षक को अपने आप को जज करने के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन निगाहें उन्होंने बिल्कुल टिकाए रखी और अब अंतिम बैटर के रूप में सिद्धि और तृप्ति की जोड़ी, तृप्ति 14 रन बनाकर खेल रही हैं। 8 गेंदें बाकी है, 9 विकेट पर 115। ऑरेंज टाइग्रेसेस शुरुआत काफी खराब रही और इस प्रकार से ये विकेट कीपर भी गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाई और चौका, इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा 121। 9 शानदार 4 रन्स और इसके साथ ही अब 19वें ओवर की अंतिम गेंद, 119 रन और ये बिल्कुल तीसरे अंपायर के पास जाएंगे। स्टंप को लेकर अपील यहां पर हुई है। श्रेया लांजेवार बेहद कारगर साबित होते हुए यहां पर, और विकेट कीपर, और जिस तरह से टीम में उत्साह है, निश्चित रूप से वो जानते हैं कि विकेट यहां पर मिल चुका है, काम तमाम हो चुका है 19 ओवर्स में। जरूर यहां पर थर्ड अंपायर के पास गए हैं ये चेक करने के लिए कि क्या कहीं पैर का कोई हिस्सा क्रीज के पिछले हिस्से में तो नहीं था। और ये देखें, keep rolling, keep rolling, keep rolling. Yeah, ball is passing close to the bat. Sound sense, please. Stand by. Sound sense is building up. Take it back. So. Stand by. Stand by. Sound sense is building up. थर्ड Sound अंपायर sense. Keep rolling. Keep rolling. Yeah. Flight line. Keep rolling up to the wicket keeper close. Yeah. Satisfied. No bat involved. Give me the best side on angle for stumping. Take it back. Take it back. Now take it forward. Take it forward. Yeah. We did. Yeah. In the crease. Yeah. Satisfied. I have decision for the big screen. Not पूरी out, तरह I से repeat, आश्वस्त not out. थी, लेकिन नॉट आउट करार दी गई हैं। पंजा जो था वो पूरी तरह से क्रीज के अंदर रहा और अब अंतिम ओवर इस मैच का नुपुर कोहली लेकर आई हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त सिद्धि और तृप्ति दोनों इस वक्त क्रीज पर हैं 10वें विकेट के लिए। एक ओवर में 32 रन चाहिए जीत के लिए और एक ही विकेट है और इस बीच घुमा दिया है बल्ला मिड विकेट की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे के लिए भाग पड़ी है और ये देखिए विकेट का पतन। इसके साथ ही बैक टू बैक दूसरा मैच नेको मास्टर ब्लास्टर्स के खाते में जाते हुए बड़ी जीत अर्जित की है, बड़ी जीत। और निश्चित रूप से इस जीत का श्रेय इस पूरी टीम को, और जिस तरह से ये मैच अभी तक यहां पर चला, 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेलने दिए डिफेंडिंग चैंपियंस को अपने पहले मुकाबले में इस सीजन।
निको मास्टर ब्लास्टर्स क्या कमबैक किया है। पिछला सीजन हालांकि पूरी तरह से वॉश आउट रहा था, कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाई थी, और दूसरे सीजन जब उतरे तो दमखम के साथ ऐसे कि डिफेंडिंग चैंपियन को भी नहीं छोड़ा। पिछले कल पगारिया स्ट्राइकर्स, तो आज बैक टू बैक दूसरे मुकाबले में ऑरेंज टाइग्रेसेस को मात दी है। 30 रन से यहां पर ये मात दी है उनको, और शानदार जीत अर्जित करते हुए। पिछले कल बेहद क्लोज मामला हुआ था, बेहद क्लोज मुकाबला हुआ था पगारिया स्ट्राइकर्स के साथ, लेकिन उसमें भी शानदार जीत। और आज एक बार फिर नुपुर कोहले शानदार तरीके से यहां पर जाओ इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए। 3 ओवर्स में 3.1 ओवर में 16 रन 17 रन दिए हैं, 2 विकेट हासिल किए हैं। निको मास्टर ब्लास्टर्स लगातार दूसरा मैच, दूसरी जीत, और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस मुकाबले में जिस तरह से शानदार तरीके से डोमिनेट किया। इकोनॉमी में स्पिनर्स का ही रहा है, और इकोनॉमी में 4 ओवर में 18 रन आर्या। और ये देखें आप Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to the post-match presentation of the Women's Vidarbha Premier League 2026. This was match number 2 played between the NECO Master Blaster and Orange Tigresses here today this evening. What a contest we've witnessed today. And now we move on to the part where we honor the players and the partners who made this league possible. The Vidarbha Premier League and the Vidarbha Cricket Association would like to take this moment to express their heartfelt gratitude to every sponsor and partner who has stood behind this tournament. Please join us in acknowledging each of our valued partners. Broadcast partner, Jio Hotstar and Sony Sports Network. Medical partner, New Era Hospital. Growth partner, Pagaria Group. Renewable energy partner, Chirayu Power. Official travel partner, Ease My Trip. Official automotive partner, Toyota. Food delivery partner, Swiggy. Beverage partner, Campa Shore. Energy partner, Armor Energy. Official radio partner, Radio Orange. Exclusive marketing agency, TCM Sports Management. And now, ladies and gentlemen, it is my pleasure to introduce the distinguished guests of our panel who are joining us in this post-match presentation. Ms. Shubhangi Kohli, Women's Cricket Committee Special Invitee. Mr. Siddharth Jaiswal, Director, NECO Defense Systems, representing NECO Master Blaster and Jaiswal NECO Group. And Ms. Indu Majumdar, Owner, Orange Tigresses. And now the moment that we all have been waiting for, the Player of the Match Award, which goes to Arya Gohane. May I request Ms. Shubhangi Kohli to please give her the award. Arya, in the meantime, we did have a chat in the mid-innings. You're pretty confident and the team has done it. Yes, I told you before that we are we are very flexible, and we are the team that's adapts to any situation. So we are very confident about the total, and we did it. What do you think worked well for the team today? Y'all posed a very good total. Y'all restricted the team. Yeah, I mean everybody bowl according to their strengths. So that was the main point for our team, and that is the strength of our team. All right, congratulations on that win today. I will request Ms. Shubhangi Kohli to please give her the Player of the Match award. Congratulations, Arya. Thank you so much.
And now please join me in welcoming the captain of the winning team. Give it up for Shraddha Nabira for the NECO Master Blaster. Shraddha, another day, another win. How does it feel? I mean, it's great. So you would have chosen fielding first, but you did put up a good total. The team did really well. What is the conversation that happened before the game started? I mean, we have already planned what we had practiced, and it was just to execute those things in the match, which happened, and that's why we won. So are you confident enough going ahead, whatever deep ends you all are put into, you all are going to come out of that victorious? I mean, 100%. Yeah. Looks like the team to beat because you all have been superb in the first game as well as the second. Congratulations on this win. Hope to continue this run. Thank you so much. Thank you. That was the winning captain of NECO Master Blaster. Now, can we have the losing captain, the Orange Tigresses? They did put up a very good fight today. Disha Kasat. Check. Disha, tough start today. What do you take back home from today? I think a lot of learnings from this game, starting from the bowling. We started well, but we couldn't end. I think we were 20 more while giving, and then I think we didn't start well in batting, but there were a lot of positives. I think in terms of batting, when our top order didn't contribute, our middle order and middle lower order contributed. And a lot of positives to take forward, and we will try to get back stronger tomorrow. Silver lining, probably Trupti and Tanvi doing really well in bowling as well as batting. The team going ahead, do you think they're going to build around these performances that you all have had today? I think definitely. I told you there were a lot of positives going ahead, and then I think if top order contribute, we will look very good. I don't think any worry because everyone looks in the good. I think it's just about application there. All right, just the first game. You have many more to come. Hopefully you get back from here. Yes, thank you. Thank you so much. That is it from the post-match presentation. We'll be back with another cracker of a match tomorrow.